लीडरशिप में बन रहा है, यानी कि जो वार्ड, टोटल वार्ड है उस सिटी के, हम बना रहे हैं पूर्णिया और कटिहार के लिए, तो उस सिटी वार्ड का हम सिटी सबमिट किया हुआ है, किसी भी समय वो पास हो सकता है। तो ये 3 क्षेत्र है। उसके अलावा हम लोगों ने कई ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज के लिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट NIRD जो कि हैदराबाद में है, भारत सरकार की संस्था है, में आते हैं, वहां भी हम लोगों ने ट्रेनिंग लिया, मैंने भी लिया, डॉक्टर राजन सिन्हा ने भी लिया, और हम लोग उनके साथ भी मिलकर काम किया। ये हो गया डिजास्टर के क्षेत्र में। अब हमने 1000 से ज्यादा पंचायतों में हम लोगों ने विजिट किया है, और दिमाग में वो रेल की तरह चलता है कि कहाँ किस पंचायत में क्या कमी थी और क्या होना था। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो हम लोगों ने BRG बैकवर्ड रीजन्स ग्रांट फंड, अब आप जान लीजिए कि ये एक ऐसा प्रोग्राम था, ये पहला प्रोग्राम था भारत सरकार का जिसमें जो कोई राशि आया तो उसके खर्च करने का स्काई वाज द लिमिट। आप उस राशि से अपने पंचायत, A पंचायत, B पंचायत, C पंचायत की अलग अलग आवश्यकता हो सकती है, यूनिवर्सल कोई प्रोग्राम नहीं, तो आप खर्चा कीजिए। तो उसका भी हम लोगों ने बनाया। सहयोग से देखिए कि बाद में हम लोग इवैल्यूएशन भी उसका करने का मौका मिला, इवैल्यूएट भी किए हम लोग BRGF का। और फिर हम लोग एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भारत सरकार का ही एक कार्यक्रम था, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन NFSM, उसका भी हम लोगों ने 12 जिले में अध्ययन किया। उसका मुख्य सार यह था NFSM का कि जिस जिले में चावल की खेती होती है ज्यादा, वहां गेहूं की खेती करवाओ, जहां गेहूं चावल की ज्यादा खेती होती है वहां दलहन की खेती करवाओ। तो हम लोगों ने इसका एक स्टडी किया, और बिहार सरकार ने, केंद्र सरकार से सहायता जो मिला उसका कैसे उन्होंने खर्चा किया, क्या गया, इन सब का भी हम लोग विस्तृत रूप से रिपोर्ट किया। एक कार्यक्रम तो हम लोगों ने कहीं किया, लेकिन एक मेंशन करना जरूरी है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जिसको हम लोग माओवादी कहते हैं, नक्सलाइट कहते हैं, तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म LWE, इसका भी हम लोग गया में, जमुई में, जहाँ प्रभावित क्षेत्र है, सीतामढ़ी के कुछ ब्लॉक में, इस तरह से हम लोगों ने स्टडी किया और गए, अंतिम छोर तक गए। जिसकी बात सुनते हैं आप डरते हैं, कुछ उन लोगों से भी मुलाकात हुई, हमारे श्रवण जी को मोटरसाइकिल में बैठा के ले जाया गया और वो काफी डीप बात हुई। तो वो भी समझदार है, वो जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता था कि वो भी चाहते थे कि स्कूल बने, हॉस्पिटल बने, सड़कें अच्छी बने। तो सड़कें तो इतनी अच्छी बनी कि पूछे मत। हमारे साथ जो इंजीनियर साहब जा रहे थे, बोले कि चलिए आप ही के बहाने हम भी सड़क को देख लेंगे, बनाया था वो नहीं। तो ये एक छोटा सा परिचय है, तो ज्यादा इस परिचय को हम लंबा नहीं करेंगे। अब एक विषय भी हम लोगों ने चुना है, तो सवाल है कि इस विषय को क्यों चुना है, उस विषय को क्यों चुना है। संजय जी लाइन पर आ गए हैं, संजय श्रीवास्तव जी। मैं लाइन पे हूँ सर। हमारे इस प्रोग्राम के सर हीरो हैं, उनसे आज सुनेंगे। हम राजन की जरूरत है, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। हाँ, सुधाकर जी हम लोग के संस्था के संरक्षक हैं और मेरे D1 से कंधों से कंधे मिला करके काम करने वाले साथी भी हैं। और मैं देख रहा हूँ कि ऑनलाइन प्रोफेसर GP सिन्हा के एक्सटेंडेड फैमिली, मेरे एल्डर ब्रदर RSP सिन्हा, XCMD MTNL भी ऑनलाइन हैं, मेरे छोटे भाई भी हैं और मेरे नेफ्यू भी हैं, और फैमिली, पूरी एक्सटेंडेड फैमिली ऑनलाइन है। इसके अलावा डॉक्टर सत्येंद्र मुझे नजर आ रहे हैं, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ऑफ बिहार में रहे और स्टेट प्लान को बनाने में एक बड़ी अहम भूमिका उनकी रही। हमारा स्टेट प्लान जो है बिहार स्टेट का
प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री है, उसको मॉडल के रूप में देखा जाता है। और मुझे उसके बेसिस पर लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में प्रेजेंटेशन का कई मौका मिल चुका है। तो यही बताता है कि उसकी मान्यता है और डॉक्टर सदीन उसमें एक अहम किरदार के रूप में रहे। सर आपका स्वागत है। और लोग मैं कोशिश करता हूँ मेरा नाम पढ़ के फिर उनसे एक एक करके इंटरेक्ट करूँगा इन द प्रोग्राम। तो हमारे बीच में हमारे अतिथि जो आए हुए हैं BIA के इसके अतिरिक्त हमारे संस्था के संरक्षक RP सिंह राही साहब हैं जो पटना कॉलेज के एक्स प्रिंसिपल हैं। और हमारे चेयरमैन प्रोफेसर RNP सिंह, वो भी 90 इयर्स के एज में, आई एडमायर हिज करेज एंड गट्स, इस हॉल में आए हैं और बैठे हुए हैं। एक्सट्रीम आपके लिए एक्सट्रीम लेफ्ट होगा, वो एक कॉर्नर में है एंड यू कैन सी हिम। तो कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं विधिवत, और मैं सुधाकर झा जी से आग्रह करूंगा कि कार्यक्रम का कृपया संचालन करें। धन्यवाद। तो एक बार फिर से स्वागत है ऑनरेबल कर्नल श्रीवास्तव साहब का। मैं कह रहा था कि हम लोगों ने लाइटनिंग को क्यों चुना। लाइटनिंग इसलिए चुना है कि हम जो स्टेट प्लान बनाए हैं, डिस्ट्रिक्ट प्लान बनाए हैं और सिटी प्लान बनाए हैं, तो अब लगता है कि रोड एक्सीडेंट और लाइटनिंग पे दो जगह पर हम लोगों को आकर के कंफाइन करना पड़ेगा। बाहर में जितना आदमी मर रहा है उससे ज्यादा लाइटनिंग में मर रहा है। रोड एक्सीडेंट में अभी भी नंबर हाई है, करीब 10 साढ़े 10 हजार दुर्घटनाएं होती है रोड की और 5 साढ़े 5 हजार लोग की मौतें होती हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि लाइटनिंग तो हमने जो तैयार किया उसको पढ़ दे रहे हैं, छोटा ही पढ़ेंगे, स्किप करके। Though as mentioned, Bihar is home to all types of disaster. Over the years, lightning has acquired serious proportion, taking a heavy toll of lives. Mostly poor and exposed, and therefore reaching out to them through technology and mass media is only way to save them from lightning strike. On a single day in the year 2016, nearly 56 people were killed in Bihar. Again, on 25th June 2020, about 100 were killed in lightning spread over 24 districts. The enormity of the subject can be easily realized by the toll it is taking over years. जो 6 साल का हमने डाटा लिया है उसमें 1278 लोगों की जाने गई है। ये जाने नहीं है, ठनका हजारों में गिरता है। तो ये 6 साल में 1278 और टॉप 4 जो जिले उन वर्षों में प्रभावित थे उनका वो आंकड़ा उसमें दिया है। It is not that we have resigned to our fate. We have arranged for an early warning system, EWS, by installing lightning sensors at various locations in the state. A mobile app, Indra Vajra, which is providing warning within 20 kilometers, 40 minutes in advance of a possible lightning. But the toll is still high, leaving on the disaster management experts to find out how to reach the last man working in the field or living in a panchayat. It is hoped that this webinar will go a long way in tackling the issue. Bihar government, through a notification, has included lightning as a local disaster and paying ₹5 lakh as compensation to the kith and kin of the victim. Bihar is first to have prepared a roadmap for disaster risk reduction 2015-30, 2015 से 2030 तक का, where reduced by 2030 is a major goal. तो इसके साथ ही मैं स्वागत भाषण समाप्त करता हूँ और
श्रवण जी को देता हूँ कि आगे कार्यक्रम को बढ़ाएं। धन्यवाद सुधाकर भाई। मैं आपको और इस पूरे टीम को इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि पटना जिला का जब आपदा प्रबंधन योजना बनाने वाली प्रक्रिया चल रही थी और हम लोग इस क्रम में पटना से सटे दक्षिण दनियामा के आसपास के गांव में लाइटनिंग कितना महत्वपूर्ण हो गया आज के समय में, वहां एक गांव में पहुंचने पर लोगों ने बताया कि पहले सरकारी बोरिंग मैदान में हुआ करता था और उस बोरिंग को लोग निकाल ले गए थे। भवन उसी तरह था। शाम का वक्त था, चरवाहे चरा रहे थे अपने पशु। वर्षा शुरू हो गई थी सर, और वर्षा से अपने को छिपाने के लिए चरवाहों ने शरण ले लिया उस नलकूप के भवन में। उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल था और उन्होंने एक सिनेमा देखना शुरू किया। उस पर लाइटनिंग हुई और मोबाइल के कारण वो 6 मर गए। उस गंभीरता इस कदर की लाइटनिंग की है, कम से कम बिहार के संदर्भ में तो जरूर, और बिल्कुल यह समसामयिक और प्रासंगिक है। हम आमंत्रित करेंगे अब अपने विचारों के साथ मिस्टर अरुण अग्रवाल सर को। बताते चले इनके विषय में। ये एलाइड सर्विसेज छोड़कर और व्यापार के क्षेत्र में कल्पना कीजिए मेधा कहां से कहां शिफ्ट करता है, और अभी ये प्रेसिडेंट है बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन पटना के। मैं आपको सर सादर आमंत्रित करता हूं, अपने विचारों से अभिभूत करें हम सभी को। श्री अरुण अग्रवाल जी। धन्यवाद श्रवण जी, और यहाँ हमारे सभी सीनियर गुरुजन। सबसे पहले आज का जो दिन है वो हम अपने प्रोफेसर डॉक्टर जीपी सिन्हा, लेट डॉक्टर जीपी सिन्हा को याद करते हैं और उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उन्होंने जब हम लोग पढ़ते थे तो उन्होंने मेरे जीवन पर जितना प्रभाव डाला, मैं समझता हूँ कि मेरे अपने एकेडमिक लाइफ में किसी भी शिक्षक ने उतना नहीं डाला। वो मुझे मानते ही नहीं थे, मुझे समझाते भी रहते थे और गाइड भी करते रहते थे, और हम लोग खुल करके उनसे हर एक विषयों पर डिस्कस करते थे। तो आज हमारे अनुज डॉक्टर राजन सिन्हा उस परंपरा को बहुत आगे तक ले जा रहे हैं। इसके लिए राजन और सुधाकर जी को भी बहुत बहुत हम उनका अभिवादन करते हैं। आज का जो विषय है बहुत ही सामयिक है, और ये जो लाइटनिंग स्ट्राइक है खास करके समझ में नहीं आता है। पहले हम लोग स्कूल में साइंस में एक चैप्टर पढ़ा करते थे कि लाइटनिंग कंडक्टर वगैरह के बारे में, लेकिन ये धीरे धीरे ये एक डिजास्टर होते चला जाएगा, ये कभी सोचा भी नहीं गया था। ये क्यों हो रहा है, इसके लिए ये इंस्टीट्यूट काफी इस पर काम कर रहा है, इसके लिए उनको साधुवाद। लेकिन इसमें हमको लगता है कि थोड़ा सा और साइंटिफिक हम लोग को जाना पड़ेगा कि इसके पीछे क्या कारण है। मैं अभी जो चार्ट देख रहा हूँ तो उसमें भी जो बिहार के जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर भी परिवर्तन हो रहा है। जो 2016-17 में कटिहार में जैसे देख रहा हूँ कि 2016 और 18 में आया, किशनगंज में 2016 में आया, पूर्णिया में 2016 और 17 में आया, भागलपुर में 2016 और 17 में आया, जमुई में 17, 19 और 20 में आया, पटना में 17 में आया। तो ये क्या कारण है कि ये यूनिफॉर्म नहीं है? किसी साल आ रहा है, किसी साल किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है, लेकिन आ जरूर रहा है। और बिहार वर्सेस रेस्ट ऑफ द कंट्री क्या चीज है, या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या चीज है, इस पर हम लोग को और रिसर्च करने की जरूरत है। तो हम लोग इस पर, क्योंकि ये धीरे धीरे जिस तरह से कैजुअलिटी बढ़ती जा रही है, ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। इस पर हम लोग को सभी को सोचना चाहिए, सिविल सोसाइटी को भी और सरकार को भी।
कि इसमें क्या करें, कि किस तरह से हम अपने को बचाएं। एक चीज और भी, क्या ये एंशिएंट पीरियड में भी लाइटनिंग स्ट्राइक इस तरह से हुआ करती थी, या आज से 100-150 साल पहले भी हुआ करती थी? क्या प्राकृतिक से अधिक छेड़छाड़ होने लगी, उसके चलते ये थोड़ा सा इसका प्रकोप बढ़ा है? क्या ताड़ के पेड़ जो है वो लाइटनिंग कंडक्टर का काम किया करते थे? इन सब चीजों पर हम लोगों को मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा मैं इस इंस्टीट्यूट के लोगों से अनुरोध करता हूँ कि इस पर भी थोड़ा सा विचार करें, और समाज को जागृत करने का आपने जो बीड़ा उठाया है ये बहुत ही अच्छा है। इसके लिए एक बार फिर आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूँ कि हमारे गोपाल भाई की इन जिज्ञासाओं को समझने देने, और हम आज के व्याख्यान में सिर्फ आपसे ही मार्गदर्शन की आशा रखते हैं, और राज बिहारी बाबू से। 2 एक्सपर्ट हमारे पास हैं, एक ज्योग्राफर हैं, और आप इस सब्जेक्ट के, आपने इस सब्जेक्ट पर बंगाल में और उड़ीसा में और कई स्टेट्स में काम किया, नेशनल लेवल पर काम किया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। वो हाई पावर्ड कमिटी ऑन लाइटनिंग स्ट्राइक बनी है, यू आर वन ऑफ द मेंबर ऑफ दैट कमिटी। तो सर आप काइंडली इन सब क्वेश्चंस को जरा ध्यान रखेंगे और हमारी इन जिज्ञासाओं को पूरा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर सर। लाइटनिंग के रूप में आते हैं कर्नल संजय श्रीवास्तव जी। बताता चलूं कि इन्होंने शैक्षिक क्षेत्र में एमटेक किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आर्मामेंट में एमबीए आईआईएम अहमदाबाद से, मास्टर इन डिफेंस मैनेजमेंट मास कम्युनिकेशन आईआईएमसी दिल्ली, एमबीए ह्यूमन रिसोर्सेस में, मास्टर ट्रेनर साउथ कोरिया अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू से, आईआरएस इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम एंड यूसी इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर अर्थक्वेक रेजिलियंस। यदि हम पब्लिकेशन की बात करें तो आप 56 पब्लिकेशन से 56, और आप 2 जर्नल के एडिटर भी हैं। यदि अवार्ड की बात करें तो अवार्ड के तौर पर अन्य अवार्ड तो है ही, प्रमुख पुरस्कारों में नेल्सन मंडेला शांति अकादमी सम्मान, ग्लोबल लीडर अवार्ड और झारखंड रत्न के अलावा और भी कई। मौजूदा आप चेयरमैन क्लाइमेट रेसिलिएंट ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिल CROPC हैं, कन्वेनर लाइटनिंग रेसिलिएंट इंडिया कैंपसिन है, मेंबर नेशनल पैनल ऑफ एक्सपर्ट ऑन लाइटनिंग है। इसी तरह अगर मैं और भी सारी स्थिति है जिस पर आप अभी काबिज हैं। और पहले की अगर बात करें तो आपके नाम के साथ ही लिखा है कर्नल संजय श्रीवास्तव, यानी आप कर्नल की हैसियत से जो वार हुआ कारगिल युद्ध, आपने अहम भूमिका उसमें निभाई थी। सदस्य इसरो एंड ऑल जो लाइटनिंग से संबंधित था उसमें आप रहे हैं। ये आपका मैंने परिचय के 25% हिस्से को ही प्रस्तुत किया है, क्योंकि आपसे ये पूरी टीम जो लोग आपके साथ बैठे हैं काफी अपेक्षाओं के साथ बैठे हैं। आपके परिचय में ढेर समय लग जाता, इसलिए क्षमा चाहते हुए अब यह मंच आपको समर्पित है। कर्नल संजय श्रीवास्तव जी। प्रणाम सर। और आज प्रोफेसर जीपी सिन्हा सर की 101वां जन्मदिवस है। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे ये मौका दिया कि इतने हमारे लेजेंडरी प्रोफेसर जीपी सिन्हा सर के 101वीं जन्म उत्सव के मौके पे
एक बहुत ही प्रासंगिक विषय पे मुझे बोलने का मौका दिया। मेरी आवाज सुनाई दे रही सर? मेरी आवाज आ रही सर? मेरी आवाज आ रही? हाँ सर, आ रही है। हाँ। आ रही है जी, बहुत क्लियर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए मैंने सर मुझे एक बार प्रेजेंटेशन राइट देना पड़ेगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर, अगर प्रेजेंटेशन राइट दें मुझे आपको होस्ट बनाना पड़ेगा। ये जो कंट्रोल कर रहे हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, आप पार्टिसिपेंट पे जाएं। मेरा नाम आएगा संजय श्रीवास्तव। वहां पे आप राइट पे क्लिक करेंगे तो मोर आएगा। मोर पे आप क्लिक करेंगे तो उस पे मेक होस्ट आएगा। मेरे पास प्रेजेंटेशन है और थोड़ा लंबा है सर, तो मैं चाहूंगा कि प्रेजेंटेशन के माध्यम से बात करूं। थैंक यू सर। सर अभी स्क्रीन शेयरिंग मेरा हो नहीं पा रहा है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप मुझे स्क्रीन शेयरिंग राइट देंगे। आपको रिक्वेस्ट करूंगा सर, पार्टिसिपेंट पे जाएं। संजय श्रीवास्तव नाम आ रहा है, उस पे अगर आप कर्सर लेके जाएंगे Recording stopped. हाँ, इट हैज। एक तो सर इसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई, तो मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर देता हूँ सर। Recording in progress. ये स्क्रीन नजर आ रही सर? सबसे पहले सर मैं श्रद्धांजलि देना चाहूंगा प्रोफेसर जीपी सिन्हा सर को, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशली डॉक्टर राजन सिन्हा सर जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, और डॉक्टर आनंद विजेता के माध्यम से हमारा यह संपर्क हुआ। वज्रपात बिहार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है सर, और आज मुझे मुख्य वक्ता के रूप में मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अपने मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर रासबिहारी प्रसाद सिंह, पूर्व कुलपति पटना विश्वविद्यालय, सम्मानित अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर वसंत कुमार मिश्र, श्री अरुण अग्रवाल जी, प्रोफेसर डॉक्टर आरपी सिंह राही, डॉक्टर राजन सिन्हा, डॉक्टर श्रवण कुमार सिंह, इंजीनियर कृष्णा कुमार, श्री सुधाकर झा जी, और इस ऑनलाइन वेबिनार में उपस्थित सभी लोग, ऑनलाइन ऑफलाइन, आप सबों को मेरा सादर प्रणाम। विषय पे आगे बढ़ने के साथ मैं बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने एक वज्रपात सुरक्षित भारत अभियान चला रखा है। ये इसलिए चला रखा है कि झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, इन सब जगहों की सफलता के बाद हमें लगा कि पूरे देश में इस कार्यक्रम को चलाना चाहिए। बिहार भी मैं 2014 से आता रहा हूँ, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, श्री व्यास जी को, श्री प्रत्यामृत जी को, अनिल सिन्हा सर को हम लोग हमेशा मिलते रहे हैं, और जो हम लोग इस काम पे कर रहे हैं उसको बिहार में कुछ हद तक लागू भी किया गया है सर। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले पटना का मौसम अभी 32 डिग्री है, और अगले 2 घंटे में 11 बजे से 2 बजे तक पटना के कुछ हिस्से में वज्रपात होने की संभावना है। ये 2 बजे तक का समय है, और 3 बजे पटना में भारी बारिश होगी। जहां तक अगले 10 दिनों के मौसम का सवाल है, अगर आप देखें 1 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक, अगर हम सिर्फ सोमवार छोड़ दें तो प्रत्येक दिन ये 11 से जो 2 बजे का समय है, इसमें पटना में वज्रपात होने की संभावना है। आगे बढ़ने से मैं बोलना चाहूंगा, सबसे पहले लाइटनिंग इज एन अवॉइडेबल डिजास्टर। आकाशीय बिजली एक अपरिहार्य आपदा है, और मैं इस बात पे विश्वास करता हूं, और हमने सिद्ध किया है कि जहां जहां हम लोगों ने काम किया है
वहां बिजली से होने वाली मौतों में कमी आई है। मैं आपको बताऊं, इस साल में 6 जुलाई को रांची गया और पूरे 24 जिलों को हमने 15 जुलाई तक एक्टिवेट किया। उसके बाद सिर्फ 2 मौत हुई, नहीं तो वहां भी इस तरीके की मौत की घटनाएं हो रही थी। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है सीजनल अवेयरनेस, मौसमी जागरूकता और उसका प्रचार प्रसार। अगर आप सही तरीके से प्रचार प्रसार, जागरूकता और उस कम्युनिटी तक पहुंचते हैं जिनको इसकी जरूरत है, और ये कम्युनिटी है किसान, मजदूर, हमारे मछुआरे, हमारे बागों में काम करने वाले लोग, जंगल में जाने वाले लोग, और जो खुले इलाके में काम करते हैं वो सारे लोग। तो ये हमारा मुख्य टारगेट होना चाहिए, और अगर हम इन पे सही तरीके से समय से पहुंचे तो जरूर होगा। अभी आपने देखा होगा पटना के जो जिला अधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उन्होंने वज्रपात सुरक्षा रथ रवाना किया। ये बहुत अच्छा कदम है और ये गांव गांव में जाके करना होगा। जब चुनाव जीतने की का वक्त आता है तो हमारे राजनीतिक प्रत्याशी हर इंसान तक पहुंचना चाहते हैं, हर तरीके से पहुंचना चाहते हैं। उसी तरीके से वज्रपात को भी एक मिशन मोड में लेना होगा, और उसी तरीके से जैसे हर बूथ कहते हैं वैसे हर परिवार, हर इंसान तक पहुंचना होगा। जहां तक हमारी संस्था का सवाल है, हम लोग क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिल, ये एक नॉन प्रॉफिट साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके अंदर 12 सीनियर साइंटिस्ट कम IAS ऑफिसर हैं। श्री अनिल कुमार सिन्हा सर, जो पूर्व वाइस चेयरमैन रह चुके हैं BSDMA के, वो भी हमारे गवर्निंग काउंसिल के सदस्य हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त है। श्री PP श्रीवास्तव, पूर्व IAS अधिकारी 1960 बैच, उनका आशीर्वाद प्राप्त है। और इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल एंड चेयरमैन एक्स ऑफिसियो इसके पैटर्न होते हैं। इसके अलावा डॉक्टर KJ रमेश, प्रोफेसर AK गुसाई IIT दिल्ली, प्रोफेसर SK दास और अन्य वरिष्ठ वैज्ञानिक, अधिकारी और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काफी काम करने वाले दिग्गज प्रोफेशनल हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हम लोगों के 4 डिवीजन हैं। जो मॉडलिंग डिवीजन है, फोरकास्ट डिवीजन है, डॉक्टर KJ रमेश देखते हैं। मैं क्लाइमेट चेंज ऑब्जर्वेशन और लाइटनिंग देखता हूँ। प्रोफेसर AK गुसाई मुख्य तौर पे वाटर का काम देखते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रोफेसर AK गुसाई IIT दिल्ली से हैं और इन्हें वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और सारी रिवर बेसिन का इन्होंने फ्लो मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड तैयार करके रखा है, और इसको भारतीय मौसम विज्ञान के साथ इंटीग्रेट किया है, और महानदी बेसिन में आंध्र प्रदेश में इस मॉडल को चलाया जा रहा है। और किसी भी बाढ़ को आने से पहले कम से कम 7 दिनों का ये वार्निंग दे रहे हैं, और सिमुलेट करके क्या एक्शन हो सकता है वो दे सकते हैं। बिहार में भी परसों ही उनकी मीटिंग थी। उम्मीद है बिहार सरकार भी उनके कामों का फायदा लेगी। जहां तक लाइटनिंग रेजिलिएंट इंडिया कैंपेन है, चूंकि हम लोगों ने साइंटिफिक नॉलेज डेवलप किया, मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं झारखंड में रह के सबसे पहले लाइटनिंग फोरकास्ट सिस्टम, लाइटनिंग डिटेक्शन एंड फोरकास्ट सिस्टम हमने डेवलप किया, और उसको झारखंड में 2008 से 2012 तक वैलिडेट किया। फिर भारत सरकार को प्रेजेंटेशन दिया, और उसके बाद 2016 के बाद से सबसे पहले आंध्र प्रदेश, फिर बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, असम, बाकी राज्यों ने इसको आत्मसात किया। और उसके बाद 2018 में प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश पे पूरे देश में उस सिस्टम को लागू किया गया है और लाइटनिंग फोरकास्ट किया जा रहा है। ये सारा जो हमने काम किया था वो हमने किसी कॉमर्शियल एजेंसी को नहीं दिया, हमने भारत सरकार को दिया, और उसी के कारण भारत सरकार ने मुझे हमेशा मौका दिया है, और हमारी जो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उन लोगों ने इस काम में मुझे हमेशा सहयोग दिया। और मैं इस दिशा में एक सीखने का प्रयास कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, जगह जगह जाके रिसर्च करता हूँ, और इसको आगे बढ़ाना और इसके माध्यम से लोगों की जान बचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। अगर इस पे आ जाए तो सबसे पहले हमारा जो उद्देश्य है, वज्रपात या उनसे हुए खतरे के उपाय के संबंध में सभी नागरिकों को जानकारी देकर और जागरूकता फैलाकर आदमी और पशु की जान और संपदा के नुकसान को बचाना है।
मैं बताऊं, सबसे ज्यादा बहुमूल्य है आदमी की जान और हमारे पशुधन। इन लोगों की जान सबसे ज्यादा आज किसी चीज से खतरे में है प्राकृतिक आपदाओं में, तो वो है लाइटनिंग। और अगर हम स्टडी करें तो पिछले 6 दशकों का डाटा है और हम लोगों ने उसमें देखा कि सबसे ज्यादा जो प्रभावित हो रहे हैं वो खुले इलाके, खेत या बगीचे में काम करने वाले किसान, महिलाएं, चरवाहा, मजदूर, मछुआरा, नाव चलाने वाले नाविक, कच्चे घर या झोपड़ी या मचान पर रहने वाले हमारे खेतीहर लोग, जंगल में शिकार करने वाले शिकारी, विद्यालय और जो बच्चे खुले इलाके में खेलते हैं, सैर सपाटा करने वाले सैलानी, महिलाएं, बरसात में फुटबॉल और अन्य खेल खेलने वाले खिलाड़ी। परसों ही बोकारो में एक लड़के का डेथ हो गया खेलते हुए। गांव के हाट बाजार, सामूहिक स्थल। वज्रपात सुरक्षित अभियान में हमारा सबसे जो मुख्य काम है, हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि लाइटनिंग है क्या। किसी भी आपदा को जानने से पहले सबसे पहले उसके बारे में ज्ञान हमारे समुदाय को होना चाहिए। आज हमारे किसान, अभी मैं उड़ीसा गया था पिछले हफ्ते, हमने किसानों से बात की, सरपंच से बात की, उन्होंने कहा किसी ने हमें जानकारी नहीं दी। हमें जरूरत है हमारे किसान मजदूर, उनको वज्रपात क्या है उसकी जानकारी देना। आकाशीय बिजली की भविष्यवाणी या पूर्व सूचना, ये हम लोगों ने विकसित किया है, लेकिन इसका एक नेचुरल तरीका भी है। मैं हरियाणा में सोनीपत के पंचायत में गया, वहां एक बूढ़े आदमी, वो करीब 90 वर्ष से ऊपर के थे, उन्होंने देख के बता दिया कि इस बादल से बिजली गिरेगी और इससे नहीं गिरेगी। तो ये इस तरीके की कैपेसिटी बिल्डिंग हमें सोसाइटी में करने की जरूरत है। आकाशीय बिजली से बचने के लिए अपने खेत, घर, काम करने की जगह पे तड़ित चालक या तड़ित रोधक कैसे लगाएं। आज अगर हमारे टेक्नोलॉजिस्ट के पास जाए या सरकार में जाए तो इतनी उच्च तकनीक की बात करते हैं कि आम आदमी की समझ से परे है। आज जरूरत है अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, इजीली टू अडॉप्ट एंड मेंटेन टेक्नोलॉजी की। और जो हमारे वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने इसका आविष्कार किया था, बहुत सिंपल बताया था, एक रॉड लगाइए, 45 डिग्री प्रोटेक्शन एंगल मेथड से आप आराम से कर सकते हैं। फैराडे जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि आप एक एनक्लोज मेटल स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप रहेंगे तो देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल स्ट्रक्चर। आकाशीय बिजली के दौरान क्या करें क्या न करें। अब देखते हैं सभी लोग पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, कोई मोबाइल से बात करने लगता है। ये सिंपल जानकारियां हैं जिसको हमें लोगों को बताना है, और ये हमारे अभियान का उद्देश्य है। और साथ साथ हम लोगों ने पूरा रिसर्च बेड स्टैब्लिश कर लिया है। दिल्ली में तो है ही है, अभी हमने उड़ीसा में सारे 16 स्टेट यूनिवर्सिटी, IIT भुवनेश्वर, NIT राउरकेला, DRDO, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और इसरो के साथ मिलकर हमने उसे लॉन्च किया है। तो चूंकि एक साइंटिफिक आपदा है और इसकी ओरिजिन कहाँ होती है, आगे क्या इसकी ट्रेजेक्टरी है, क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, रिसर्च इसके लिए बहुत जरूरी है। और मैं ये कोई अपने मन से बात नहीं कर रहा हूँ। जब मैं अमेरिका गया, मैंने वहां देखा कि किस तरीके से 1940 में जहां अमेरिका में 432 लोग मरते थे, आज वहां मुश्किल से 20 लोग, 10 लोग, 15 लोग मर रहे हैं। और भारत से कहीं ज्यादा लाइटनिंग होती है। मैं जब फेमा से वापस इंडिया में आया, सौभाग्य से अर्जुन मुंडा जी ने मुझे अपने यहाँ उनके सलाहकार के रूप में काम करने का मौका दिया और साथ साथ रिसोर्सेस, पैसे दिए, जिससे कि मैं सेंसर खरीद पाया, लाइटनिंग अरेस्टर्स, कंडक्टर्स एनालिसिस करके एस्टैब्लिश कर पाया। और मैं रांची में नामकुम का रहने वाला हूँ। वहाँ एक गांव है बजर मारा, जहाँ मेरी खेती है। हमने उस गांव को सबसे पहले लाइटनिंग सेफ बनाया। हम लोग ओरिजिनली तिलौथू रोहतास को बिलोंग करते हैं और वहां भी हमने जाके काम करने की कोशिश की है। जरूरत यह है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल साइंस है, सिंपल चीजें हैं, लोगों को बताना है और कैसे उससे बचना है उसके बारे में जागरूकता फैलाना है। टेंडर वेंडर, ये जो टेंडेंसी हमारे सरकार में होती है, टेंडर में वेंडर अपना सामान बेच के तो चला जाता है, लेकिन जो नॉलेज, समाज के साथ संवेदनशीलता और जागरूकता, ये काम नहीं हो पाता है। तो ये इक्विपमेंट परचेज के साथ साथ इट इज नेसेसरी दैट knowledge should be leveraged among the stakeholders among the government people and the community. सबसे पहले मैं आज शुरू करूंगा आकाशीय बिजली को कैसे समझे।
अगर आप देखें तो सिंपल आकाश में बिजली है, जब तक ये आकाश में रहती है इसे इंटर क्लाउड लाइटनिंग या इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग या आकाशीय बिजली कहते हैं। शॉर्ट टर्म आईसी कहा जाता है। जब ये जमीन पे आती है तो इसे क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग और सीधी लाइटनिंग कहते हैं। अगर आप देखिए, चूंकि ये आकाश से जमीन पे आते हैं, तो सबसे ऊंची वस्तु जो भी इसे रास्ते में मिलती है, whether it is a tree, whether it is a tower or a building, it strikes the highest possible object. It is not that it happens only in India. It is a global phenomenon, but more pronounced in the tropical country. And India being a tropical country, it is highly affected. The coastal regions are affected, and if you see the US, the Latin America, the Venezuela is known as the capital city of lightning. You know about the Catanumba lightning zone, which is there. So it is not a new thing. Lightning has existed since times immemorial. And I would like to answer Hamare Sammaniya Agarwal ji that in the olden times also, there has been huge lightning disasters. If you see in Egypt, there was a lightning strike and the entire ammunition dump was blown up and around 2,300 people had died. So it is not a new thing that lightning is something new. And lightning is a part of natural activity. And in India, you see this lightning has existed since long. The Tenugha Dam disaster, which was there in Jharkhand, due to which the Bengal had flood, that was courtesy lightning. Lightning had struck at the barrage and the barrage was broken. So lightning has existed since times immemorial, and there has been tremendous lightning accidents in Middle East, especially in the oil wells, in the ammunition dumps, in the military hutments. Now, due to the rise of population and the density and more frequent lightning strikes, the number of casualties are more, highlighted. As far as the lightning is concerned, if you see, the Eastern India is the hub of lightning. We have set up a research bed at Balasore, at Jamshedpur, at Burdwan, at Kolkata University, Meghalaya, Nagaland, and we are observing complete movement of lightning with the multi-sensors. We want here support from the institute, Professor G.P. Sinha Institute, if we can install a multi-sensor and analyze these things. I have tried a lot in Bihar, especially with the Bihar Disaster Management Authority, Bihar government. I seriously seek attention. This is a scientific problem. Please give us some space to install the sensors. And lightning, I'll show you that though it is a monsoon phenomena, but now we are getting almost every month of the year. Coming on to the very basic, this is the components of weather system. There's water, there's earth, and the moment sun comes, the evaporation starts. Heat due to the sun, the radiation comes, and there is a convection. So this is a basic phenomenon. It is something akin to, I always give this example, on a hot plate, if you put the water, there is always evaporation. Similar is the earth. The basic fundamental, whenever there is a hot surface and the moisture, that is a cloud, when it meets the hot surface of the earth, there is convection. If this convection is strong, it becomes thunderstorm. And if thunderstorm goes beyond 0 degrees centigrade, that is, as we go, the temperature goes down. So if it goes below 0 degree temperature, it converts into the ice droplets, which we call them in our graupels. These graupels collide with each other, and there is sound and there is electrostatic charge which is produced. It is simply like when we do combing of our, hair, and we put it in front of the small papers, it gets attracted. So there is a magnetic effect which comes. So I will request you to pay attention to generation of lightning, because the early warning which is there, you have to detect each and every factor which is there. So the moment there is a hot area, you take it that next 3-4 days when cloud comes, there is going to be thunderstorm and lightning. So heat is the first point. Then movement of the cloud, which you can get from the India Meteorological Department radars, which are open source stuff. As there is convection, you can see it in the radar. When the friction takes place, again, you can see it through the radar.
the temperature, the moment it is dB -10, -15, you can clearly see on the Doppler radar the lightning. We have the INSAT 3D satellite, which is readily available. You can see the convection when it happens. So heat, moisture, both make atmosphere unstable, and this instability is the reason to generate the lift, the convection, and the development of electrostatic charge. We as an individual, what we get? Basically, electric current and the large noise. This is how it forms. The sun sets in, the sun ray comes, there is evaporation, formation of cloud. This is a very, very important thing. This is for everybody. You can see the cumulonimbus has cloud come, the black cloud. And now the charge has formed and lightning strike is going down. So it is very important. Please see it again. The sun ray, the evaporation, formation of normal cloud. This cloud turns into cumulonimbus cloud, that is a black cloud. There is formation of charge, you can see, and you can now see the formation of charge going down. And this is how it moves. So it is very important to know how lightning forms. So basically, heat, moisture, which causes instability and lift, and then thunderstorm converting into. Every thunderstorm does not convert into lightning, but every lightning is preceded by a thunderstorm. This is a very important point which we have to know. And this is how the charge flows in the atmosphere. This is a micro view which I am trying to show you. The positive cloud goes on the upper side and the negative cloud comes on the bottom side. So Earth, being a neutral in this case, acts as a positive charge, and this negative charge, when there is a, though there is a vacuum between the sky and the Earth, but when this moisture is available, this moisture functions as medium, as a conductor, and this negative charge comes down to the Earth, hitting us at the highest point. If it is an open area, it moves radially outward. This is how the charge moves. But in case of monsoon, where there is low level cloud and the cloud is rolling, then you get positive charge also and negative charge also. So when you are designing protection, you have to design protection from positive charge also and the negative charge also. I am trying to answer Dr. Agrawal's question during my session. So you have to design. Earlier, we used to have a Franklin rod, just a passive device, have a conductor, rod, and 45-degree protection area it used to protect. Faraday's cage, it will protect you from both positive and negative. Franklin rod will protect you only from negative. This is the stages of thunderstorm. The moment this thunderstorm crosses this 0 degree, as it goes up higher, the temperature goes down and it converts into ice droplets. And if you go onto our Doppler radar on the India Meteorological Department website, Patna radar, it will show you very, very clearly. Now it is visible that -15, -20 degree, absolutely lightning is visible from the sky, both by satellite and the radar also. Now coming on to the cloud. I now romance with the cloud. I love clouds, and wherever I go, I take pictures. When I fly, I take pictures. The Indian detection system so far is from satellite and the ground-based system. We have no mid-air system. There are occasional launching of balloons which are there, but not a continuous system. In United States of America, they have satellite-based systems which are continuously observing the phenomena in the sky from ground to the sky in between phenomena. We have our Doppler radar, which does a lateral scanning and a vertical scanning. This cloud, the white cloud, simply I'll say, which is known as stratus cloud, cumulus cloud, these clouds are not dangerous. It is the cumulonimbus cloud which is dangerous. The black cloud. This is the cloud. Every child, every farmer, every laborer should know if this cloud is in the sky and if it is coming towards you, it means lightning is coming towards you. I have named it Akashiye Bijli Wale Kale Ghungrale Badal. So this is the dangerous cloud which we must know. This is a natural way to identify lightning. Whenever there is a black
cumulonimbus cloud, काले घुंघराले बादल, there is light breeze, हल्की हवा चल रही, हल्की फुल्की बारिश हो रही, आप समझ लीजिए कि लाइटनिंग आपकी ओर आ रही है। लाइटनिंग के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, इंटर क्लाउड फ्लैशेस, क्लाउड टू ग्राउंड फ्लैशेस, साउंड 1 to 30 megahertz. Now this comes the RF energy, radio frequency, which is called nowadays as a lightning detection sensor, which India has also deployed, and there are 83 sensors deployed in India. Bihar has, after the Government of India initiative, Bihar has additionally purchased 6, lightning detection sensors, and they are deployed in Bihar. Though Government of India has a network, and Government of India gives you a forecast from satellite, radar, lightning detection sensors, and automatic weather stations. Bihar has procured 6 sensors privately from a private agency, and that is giving you the lightning forecast. I must tell you that when you detect lightning detection sensors, the range is 1 to 30 megahertz. The cloud sky, the cloud lightning is in the range of 15 to 30 megahertz. And that is the basis of forecast. And the ground, that is the cloud to ground lightning strikes, are in the range of 1 to 12 to 15 megahertz. The one which Bihar has detects in the range of 1 to 12 megahertz. So 13 to 30 megahertz is missed out. There is also energy in 250 kilojoules, current 30 to 180 kiloampere. Temperature is even 5 times than the temperature of sun, and their voltage. So lightning scenario, cumulonimbus cloud, light wind, thunderstorm, hailstorm, heavy rain, cloudburst, tornadoes, hurricane, cyclone, dry lightning. Dry lightning is important. This evaporation is a continuous phenomena, and there is accumulation of charge in the atmosphere. It is GMT mean time 2 o'clock, that is 1930 hours in the Indian time, where a natural discharge from the atmospheric electricity takes place to the ground. It's more pronounced in the equatorial region, but when there is a scorchy day, when there is heat, you may get lightning strike without even a cloud. So that is the time you need to detect it from the radar and the satellite. That time, the lightning detection sensors, which are based on the RF device, may not detect it. Now, it is important to understand how lightning strikes. Lightning is similar to, it falls vertically and then moves laterally. Vertical strikes, deaths are generally in the range of 20 to 21%. But it is the lateral strikes, lateral spread. This is the model. Say if lightning is coming to the tree, striking the tree, this is the vertical strike, which I am calling. And it is a tree which has a maximum voltage. And if you touch the tree, we call this touch potential. And that is why we say, don't touch the tree, don't be near tree, because it will electrocute you. And after falling, it spreads out in the form of this circle. So this is the ground current which is moving out. You can see if it is 10 kilovolt, this is 9, 8, 7. And see this man standing. The difference between the steps. This difference between the step, there is a difference of voltage. And that is why this is called step voltage. It is a step voltage which kills you. The current enters from one side, comes out from the other side. So step voltage is the reason for your death. If you have both the legs together, the lightning will cross, there will be no step voltage and you will not die. An example is the bird. The bird, when it sits over the wire, her legs are together and there is no step voltage. But it is very strongly pronounced in case of animals, four-legged especially. When they get lightning strike, there is huge step voltage and they jump. And you have heard about the 19th May 2019, 18 elephants died in Assam. So it's a very, very strongly pronounced among the animals. So what you have to prepare is do not have the step voltage. This, how lightning looks alike in a city. In city, lightning is absorbed in between the buildings, so it does not spread. But in village, if you see, it strikes and it spreads all around. This is
appears so because mainly open area. Patna, you will see something like this. But in villages, if you go to Bihta, Hajipur, and rural areas, you will see this sort of lightning. It's mainly due to the open space. The thunder is a sound caused by lightning. When it comes down, it pierces the atmosphere, and the huge sound which is produced, and even supersonic waves outward is produced, and lightning strikes on ground. Lightning is not only a curse, it's a blessing. It's a blessing of Almighty. And look at the beauty of nature. Nature has created lightning. We all need nitrogen in our soil for our fertility. So before we go for cropping, the lightning strike takes place, and the atmospheric nitrogen, we know that 79% of nitrogen is there in the atmosphere. This atmospheric nitrogen mingles around with the soil, making it fertile. So it's a blessing of Almighty that nitrogen fixation is the process through which the Almighty makes our soil fertile before we go for farming. In the atmosphere, the ozone formation takes place due to lightning, and you know this ozone prevents us from the bad effects of ultraviolet rays. As we know, in southern Bihar, in Jharkhand, or in tribal region, hilly regions, lightning also causes mushrooms and button mushrooms, which is a rich source of calcium and medication. The Italian button mushrooms are very much used for medication, and it's a high source of energy. So there are a lot of good things also about lightning. Lightning is a huge source of energy. There are researches going on in Sweden or in Odisha. We are trying to harness this energy. And even if we harness one day of lightning strike, it can enlighten the complete city. Now again, how lightning strikes, it's a touch voltage, step voltage, and it affects your basically heart. Our heart beats because of the valve, and the valve has an electrical impulse. If lightning strike takes place, your electrical balance may get affected and your heart may stop beating. So it is very, very important that whenever you do treat a lightning victim, you must have first CPR and then fibrillator. I would like to quote an incident which happened last month at Nagpur airport. As the aircraft came, two engineers went to check the aircraft, and these engineers were hit by lightning. And one of the engineers, Sachin, was declared dead at the airport. And from ambulance, he was being taken to the hospital. En route, the paramedic first gave him CPR. He did not wake up. But then there was a fibrillation given at his chest, and he woke up. So after being declared dead, after 25 minutes, this man again got alive. So Sachin, it's a open case available in the media. You can see two things are very important, CPR and the fibrillation. I'll show you. I have taken it especially in my presentation. And second thing, what you get is the respiratory problem, burn injuries, and bleeding also. So the impact of lightning, basically loss of human and animal life, loss of service to the people, loss of cultural heritage. You saw it striking the Dwarkadhish temple. But I must quote here that we have Lord Jagannath temple and so many temples, Meenakshi temple, Rameshwaram, Konark, old palaces in India, they had this technology. And all the Indian ancient monument has a lightning protection system, and they are not getting affected. You go to Bodh Gaya, it is well protected by lightning. But you go to Qutub Minar was hit by lightning, 2 upper stories fell down, and now we have put a lightning arrestor, and Qutub Minar is safer now. So our ancient tradition, we had a lightning protection system. Our system of making house, if you go, how we go for making house, we first do the Dhatu Puja, Bhumi Pujan. What is Bhumi Pujan? Bhumi Pujan, you put Dhatu in the center of the house as per the Vastu. And then our system is that we put a metal rod. If you go in our ancient Andhra or the village culture of Jharkhand, you will have a metal rod in the house which protrudes outside and protects you. And there's a Faraday's cage which is made. So our ancient science, as per the Vedic science, we had a lightning protection system. But post our
colonization, though we got independent in 1947, we are still colonized knowledge-wise. And when I propagate about our Hindu Vedic science, there are a lot of opposition which comes from the Western world, but I am ready to take it, and we have proved it. This is just an awareness video which I would like to play, because I am playing this in the beginning because people generally are attentive in the beginning. So please listen to this. लगता है मौसम बिगड़ रहा है। बाप रे, लगता है ठंडा गिरने वाला है। बरगद के पीपल के चौड़े पेड़ के नीचे छिप जाते हैं। चलो, हाँ चलो 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 चलो। सावधान, अचानक घने बादल, तेज हवा, बिजली की चमक, वर्षा और गड़गड़ाहट की आवाज सुनकर ऊंचे या एकल पेड़ों के नीचे न जाएं। एक साथ कई आदमी इकट्ठा न हो। गीले खेतों में हल चलाती रोकनी या अन्य कार्य कर रहे व्यक्ति तुरंत सूखे एवं सुरक्षित स्थान पर आ जाएं। तैराकी कर रहे लोग, मछुआरे आदि अविलंब पानी से बाहर निकल जाएं। यदि आप खेत खलिहान में काम कर रहे हो और किसी सुरक्षित स्थान की शरण न ले पाए हो, तो जहाँ है वहीं रहें। हो सके तो पैरों के नीचे सूखी चीजें जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, बोरा या सूखे पत्ते रख लें। जमीन पर न लेटें। धातु से बने कृषि यंत्र, डंडा आदि से अपने को दूर कर लें। धातु की डंडी वाले छाते का उपयोग न करें। यदि आप घर पे हो तो बिजली से चलने वाले यंत्र को बंद कर दें। Lightning Resilient India campaign, our first aim is to prevent death of people and animals by scientific measures, and in the long run work towards the environmental upgradation so that we prevent the occurrence of extreme events. These are the three things we always say. First, download the Damini app. Second, you should know what to do, what not to do. And third, install lightning arrestor or conductor. This is an important slide which I have taken from my friend Dr. Mukund Sahu from All India Institute of Medical Sciences at Bhubaneswar. It is important that how lightning strikes. I have told you. Now the lightning victims, only 10% people who are hit by lightning, they die. And first aid points, which is important, is call for help, assess the situation, respond and resuscitate. And if you go, respond, lightning either affects your valve or causes a heart attack. So it is important that you give CPR. And if not CPR, if it doesn't resuscitate, then this is the method of resuscitation, and this is a method of defibrillation. So at village level, the medical units which are there, they must have automated external defibrillator. This is a very much required thing, especially in case of Bihar and rural areas. As far as the trauma is concerned, that is managed. Coming to lightning in Bihar, I'll go fast. And lightning occurrence, mortality due to lightning, climate change, and socio-economic vulnerability. Lightning occurrence. This is the 2019-20 map of Bihar. And if you see, Bihar had total lightning 4,31,000 lightning strike. And then the cloud to ground lightning was 1,47,000. So out 4%. This is the 2021. Again, you can see widespread lightning in Bihar, and the conversion was 30%, and there was 63% rise in the lightning in Bihar. But during Corona period, there was a decrease in lightning, you can see, and more widespread lightning has taken place. This is the cloud to ground strike, 1920. Highest strike was in September. June, July, you get the strike. Basically starts in April after the Kalvaisakhi again. 2021, it was September.
But in 21-20, it was June which had the highest lightning strike. So if you go the trend wise, month wise, 2 years we have observed in the September, third year it is in June. If you see the comparison, this is 1920, 2021, 21-22. Now, why it is? Lightning is directly related, as I told you, heat and the moisture. So there is a very strong relation between the monsoon and lightning. So lightning strike will be there whenever there is a movement of monsoon cloud. So it is very important that we must monitor movement of cloud during the monsoon. This is just a data. There was 139% increase in 2021. There was 23% decrease in 21-22. And this year, again, there is an increase in lightning in Bihar. So it is very important that whatever is being detected, it should be properly analyzed. And the real-time data, the projected trajectory which we are giving, Bihar should take use of it. Seasonality of deaths. This is the cloud-to-ground lightning which we have shown all over India. This is what has happened. And if you see the seasonality, April to July, Eastern India. August to September, it is the Central Bihar. October to December, it is Western India. And then January to March, again, it comes down to the Tarai region of Bihar. Every quarter, you see Bihar has figured. Bihar gets the lightning, but less lightning. But the impact is more in Bihar. And the seasonality of lightning for every district is different. We have worked out for each district of Bihar, but I will request government of Bihar, especially Bihar Disaster Management Authority and the department, should take cognizance of our research and should utilize the seasonal aspect of lightning trend in Bihar for their awareness campaigns. We have these complete data of fatalities month-wise. We have also gone of lightning time of occurrence, which time lightning occurs, morning 6 to 12, 12 to 6, 6 to again 12 in the evening. So various parameters for every state and district has been done. And we can share with this state governments, provided they are ready to adopt it. We have also gone on the timing of lightning. We have also gone on the vulnerability in terms of area, number of lightning strikes per square kilometer for every district. And we have also gone for the per 1,000, population, what is the vulnerability. So everything has been done. You can see Bihar is not that vulnerable what the number of deaths are. So it is important that why with less number of strike, more number of deaths. We have done a relation of thunderstorm with the lightning, how many thunderstorms are converting into lightning. So those trends are also need to be analyzed. So this is the scientific aspect, lightning occurrence data, which we work. And if you see, our report shows that Bihar falls in the lightning rod zone of the Bay of Bengal. This is the kill. We have just an analysis, strike versus kill ratio. So Bihar again has a 1819 is the index, quite low. Mortality due to lightning. If you see, lightning is the biggest killer. And even the latest report of NCRB, which has come up, again, lightning has 2880 deaths. So this number is gradually increasing. And Bihar figures here generally in the top 3 always. Now, if you see the state-wise trend in India, this is all the states. Madhya Pradesh is the highest lightning deaths, followed by Odisha. And Bihar, if you take 10 years back, Bihar had less deaths. But now, in last 5 years, Bihar had more deaths. Good thing is that the current disaster management department, disaster management authority, BSDMA has started working very extensively on this. And there is decline in certain areas. But it is very, very marginal decline. There is a need to address, go to the community. The entire effort which is being done on social media and other things. And it really made me happy when District Magistrate of Patna, the District Magistrate of Gaya, Aurangabad, we all
launched this Vajrapat Suraksha Rath and we went to the Panchayat and villages. This needs to be done based on the seasonality, on the pattern of Jharkhand, Odisha. Whenever there is a India Meteorological Department gives you 48 days of outlook. These 48 hours of outlook, 24 hours of outlook is the time when the district should just send the vehicle, spread the awareness, people will be aware about it. Climate change and lightning. It is very important to understand the weather pattern, how Bihar gets affected. With 1 degree rise in temperature, there will be 12 times rise in the moisture and so the lightning. This is a study by the California, but our lightning report shows that in India, in 1 year, 34% rise in lightning was observed in 1920 to 2021. Punjab, West Bengal, they got 331% rise. Bihar had 139% rise. We need to analyze this and we need to work towards it. This is the lightning strike changes data. We have also done analysis. There are few states where lightning strike had fallen down. Why? Because these states were under drought. Since there is no moisture, no monsoon, so there will not be lightning. But whenever monsoon, moisture will come, there will be lightning. So it is important that seasonality has to be studied for North Bihar separately and South Bihar separately. This is the weather pattern, the Bay of Bengal, which generates maximum moisture and Bihar falls into it. This is the second route, Arabian Sea and the Bay of Bengal together, and another way bifurcating. Western disturbance adds fuel to the fire, and this disturbs our monsoon, creates an instability, and that is why you will find the North Bihar getting very intense lightning even during monsoon. That's more aggravated by the western disturbance. There is anticyclonic storm which takes place during the December end or January. That makes lightning strike in Tarai region of Bihar in the winter season also. Agroclimatic factors. This is a very, very important point. If you see the agroclimatic factor, Bihar is in 4 zones, zone 1, zone 2, zone 3 alpha and zone 3 bravo. And if you see on the soil pattern here, most of the soils are sandy. So these sandy soils, when there is sun, it gets warm faster. When there is cold, it chills very fast. So due to the rapid change in the temperature of the soil, it affects instability in the weather, and there is more frequent lightning in Bihar than other states. And there is low level cloud in the Bihar. If you see the analysis through our radars, there are synoptic features which are below, 2 kilometer, 4 kilometer, and lightning is taking place in Bihar. It is more due to the rapid, change in the weather and instability. So it is very important to analyze the weather pattern and relate it to the soil pattern. This can be overcome by creating more water bodies, more forestation. If you see the rainfall variability, I have taken this for all the 38 districts of Bihar. You see the total rainfall differs. If you see in June, it is Jamui, it is 140. And if you see in Araria, it is 258. In Arwal, it is 97.9. So every district is different. What I'm trying to show by this data, that rainfall pattern is different in every district, and every district needs to monitor it closely. At National Disaster Management Authority level, we are going to set up a climate change hazard cell, and that hazard cell should be set up by every state disaster management authority and the district disaster management authority. We call global warming, climate change, climate extremities, action. These all are big terms. Action has to be local. Then only you can protect yourself. This is a rainfall pattern. This is a June rainfall pattern. This is a July rainfall pattern. This is August. This is September. You can see that these are the red areas which are going to get heavy rains. These are the areas which are going to get normal rain. So these are the hotspots of lightning which you need to identify. This is my article which Dr. Rajan Sinha sir had read in the Prabhat Khabar. The overall
Depletion in water bodies in Bihar has been phenomenal, especially in the urban and the semi-rural areas. The land has been grabbed, the water bodies have been encroached, and due to this, there has been a sharp rise in lightning, especially in the urban areas like Patna, Gaya. And you can also see the Patna has become the pollution capital of Bihar. Due to rise in pollution, there is heat. Due to depletion of water bodies, there is heat. And whenever the moisture comes, there is a rise in lightning. Now everybody tells me you are a Bihari and highest number of deaths are in Bihar. Bihar mein log marte kyun hain? This is the aspect, socio-economic dimension of lightning, due to which people die in Bihar. It is a livelihood pattern. Our 75 to 80% population still works in the open in agriculture field or in their livelihood. Housing pattern. The kacha houses in the villages are in abundance, and these houses are mostly of the tin sheet. These houses are reasons. Land use patterns. The safe lands are grabbed by the powerfuls, and the unsafe land, basically along the coast of the rivers, ponds, hilltops, which are not very, very congenial, are with the poor people. The literacy rate. The farmer, the laborer who are in the field, his literacy is not there. He does not know how the lightning is going to impact. Even if he is seeing the flash, he does not save himself. He works. Population living in multi-dimensional poverty. People living in the downtrodden lands, areas, they are affected. Lack of access to communication technology and social media. They don't have mobile. They don't have social media. They don't know Facebook. We in Patna, we say we have disseminated the lightning forecast. But does it reach to the farmer? No, because first, he is in the field. He does not have mobile phone. He has no literacy. He does not know how to save. Why can't our PCR van, which are doing patrolling, can be used? Why can't our CSE center, our Anganwadi, our Jivika can be done? In fact, in last few days, I saw some tweets from the Panchayati Raj departments. That was very, very enthralling, encouraging. It is a collective responsibility of all of us to go to the villages and make them aware and make them safe. Who are the victims? Urban population 44%, rural 96%. It is a 70% farmers, women 34%. The 25th June 2020 incident where 103 farmers had died, there was 86 farmers who had died. And out of which there were 42 children. So that is the percentage we have of the losses. People dying mainly who are in the open areas. There is poor development of mind of the villagers because they are scared of lightning. There is a tribal relationship. The tribals in southern Bihar, they die of lightning because of their livelihood pattern. There is death of animals, and there is huge revenue loss due to payment of compensation. My earnest request is, please invest in the prevention, mitigation, not the compensation. And we very proudly say, the Government of India says that Government of India has made a provision that 10% money of the State Disaster Response Fund can be utilized in giving compensation. And the state has declared lightning as a state-specific disaster. The biggest anomaly of this system is it does not cater for fund for prevention, preparedness, mitigation. So there is no money, no provision for saving life. This 10% is for payment of ex gratia. So this needs a change, and lightning needs to be identified and notified as a disaster. There is some social aspect of lightning. Every village must do the lightning assessment of their village. These hilltops, they are the dangerous areas. These ponds, dangerous areas. These single trees are dangerous areas. This must be identified. If there is a hill, during the first half, lightning is generally on the eastern side. So all your activity should be on the western side. This is very, very important point. If there is a hill,
If lightning is there in the morning, it is generally in the eastern side. There is no lightning on the western side. So all your cattle grazing, farming activity should be on the western side. In case lightning is in the second half of the day, the lightning is on the western side. So all your activity, farming, cattle grazing should be on the eastern side. These are simple things which needs to be taught, which needs to be made as a habit. Lightning is not a disaster where you will get a warning like flood or cyclone, 7 days warning, 4 days warning. It is an instant disaster. The victim does not even realize what has happened to him. Now, since the early warning is there, we have to make lightning safety as the nature of every individual. It has to be taught in the school. It has to be taught to the villagers, to the farmers, to the laborers. There has to be an action plan at village level. This is the Sitahara village of Bihar in Sitamarhi. And one of my students, Suraj Jha, has done this. Every year he does the lightning awareness campaign. And you see, this village has stopped its lightning. There is a guideline by NDMA to make the lightning action plan. Bihar State Disaster Management Department and State Disaster Management Authority, I suggest, should make a lightning action plan. So far, I have not seen this in the Bihar. There has to be awareness. You can see me and the district magistrate of Ranchi launching this awareness campaign. This goes to every place, every village. This is the state lightning action plan. We must have hotspot identification. We must identify the season at the district level, and district level communities should be engaged. State lightning action plan should be there. We should mobilize. There has to be an operationalization plan of the IMD. India Meteorological Department, in fact, India is one of the most scientifically correct country in the world, which is giving the incredible lightning forecast. My sincere request to the Bihar government is, please utilize this. The community should utilize these. These are free of cost, most expensive equipments, incredible in the world. World Meteorological Organization accepts it. Bihar should also accept it and use these facilities. There is a requirement of policy level intervention. Building bylaws needs to be changed. Every building must have lightning arrestor conductor. There has to be school safety plan where lightning has to be incorporated. Farmer safety plan, cattle safety plan, mainstreaming lightning safety with government schemes like Manrega, watershed program, PHED, and solar mission. We are putting up large number of solar panels. There is a requirement of lightning protection. State farmer safety action plan. Village action plan. Village must undertake lightning, understanding of lightning, early warning, and preventive action. These are the areas, these are the times when lightning awareness, public awareness program should be undertaken. Kal Baisakhi, pre-monsoon, during monsoon, and cyclone season. There has to be a lightning audit. There has to be a village task force group made in the village to do it. The MP LAD, Local Area Development Fund, the MLA Local Area Development Fund. I am yet to see a Bihar politician dedicating some portion, even a drop, into the lightning protection. You can come to Jharkhand, you can come to Odisha, you can come to Northeast. There are lightning safe shelters made by these MLA MPs. It is my earnest request. This needs a political voice. This needs a panchayat level voice for setting up the lightning safe shelters. This is the forecast, lightning early warning. Whenever there is lightning, you will get the goosebump, your hairs will rise. So that's a 2, 3, 4, 5. If you can count up to 5, and if you hear the sound, then lightning is 1 mile away. If you can count up to 10 and you hear the sound, lightning is 2 miles away. If you count 15 and the lightning sound you hear, it means lightning is 3 miles away. But if you count 15 and there is no sound, it means you are out of the danger of lightning. If you see the flash and if you can count up to 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, अगर 15 तक आवाज नहीं सुनाई दी मतलब अब वज्रपात के खतरे से बाहर हैं। तो ये बहुत जरूरी चीज है। और अगर आप 30 तक गिन लेते हैं, आवाज सुनाई देती है, मतलब लाइटनिंग आपसे 6 माइल दूर है, आप आराम से पक्के मकान में चले जाएं। ये हमारे रडार सैटेलाइट लाइटिंग डिटेक्शन सेंसर का नेटवर्क है। ये हमारा दामिनी ऐप है, जिसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा डाउनलोड कर लीजिए। और ये ऐप को अभी स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, कई इलाकों में इसकी पकड़ नहीं होती है। एक्शन प्लान ऑन रिसिप्ट ऑफ अर्ली वार्निंग। It is important that you identify which are the safe areas, which is the school nearby, which is the pakka building nearby, and never stand under tall tree, water body, tin roof house, poles, towers. Alert others. अगर आपके घर के लोग बाहर हैं, उनको फोन कीजिए, बुलाइए. Call children to safe shelters. और जब भी लाइटनिंग होती है, उसके आधे घंटे के बाद तक अपने घर से बाहर नहीं निकले. It is important there are to have lightning mitigation measures. There are non-structural measures, that is a state lightning safety and mitigation policy is required. Lightning alert dissemination standard operating protocol has to be made at the village level, at the panchayat level. State building bylaws needs to be changed and the lightning safety audit has to be done. Structural measures, installation of lightning arresters and protection devices, safe shelters. There are two types of devices. Vertical strike, for this you need conductor or arrestor. The National Building Code 2016 covers this adequately. I will request Bihar government to ensure compliance of National Building Code 2016 provisions for lightning protection. Design of lightning protection system, you must do a proper lightning risk assessment for IEC, exposure risk in terms of maximum lightning strike, type of asset to be protected. If there is a hospital and there is a house, the hospital needs a class 1 protection, level 1 protection. The house needs a level 4 protection. This has to be done. The basic simple thing, there has to be an air lightning rod, down conductor and an earthing. This air terminal is important. It should not touch the building wall. There should be some wooden material or some fiber material to be placed in between this down conductor and the wall, and it should be earthed. Key factors for designing: typology of asset, number of lightning days, and intensity and frequency of lightning, local geographical features, and climatology, other parameters. Lightning surge has increased from 2010, which used to be around 40 to 50 kiloampere. Now each lightning strike is coming in Bihar in the range of 200, 210 kiloampere. Lightning rod installation is a 100% guarantee towards lightning safety. This is a low-cost design which I have made. In this agriculture field, you can create such safe shelters which are simple. You can have the rods, you can earth it, and you can have a air terminal which can attract lightning and earth it. Similarly, this is for the houses. You can have a rod, both the sides, you can earth it, you can have a tape earthing and an air terminal which will attract lightning. So these are simple things. This can be made in 25,000-30,000 rupees and our organization will be happy to do it. We need to create this in the agriculture field. This is a very, very important thing. We don't need a rocket technology. We need a simple technology, easy technology, affordable technology. This has been done by the world's most renowned company in the lightning, that is a DEN. All those in the field of electrical safety will know lightning. DEN is the world-renowned company and they are the best supposed to be. I am not advocating for marketing, but this comes from them. There is a lot of criticism of my work due to people. I advocate that it should be simple, affordable and safe technology. And this is what it is. There are other technologies also on the Franklin rod. There are mesh methods. There is ESC device. There is a simple low-cost device, angle protection method. This is a lightning arrestor. Mind it, whenever you install a arrestor or conductor, it should be the highest point. What to do, what not to do, they are the people who need to be taught. Whenever
माय टैगलाइन इज, जब बिजली करे गर्जना, पेड़ के नीचे कभी ना रहना। हिंदुस्तान में 1500 से 2000 लोग सिर्फ इसलिए मर जाते हैं कि जब भी बिजली गिरती है, बारिश होती है और पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। हम लोगों ने गाँव में हर अकेले पेड़ के नीचे लगा रखा है। जब भी लोग गुजर रहे होते हैं, बारिश होती है और पेड़ के नीचे अपनी मोटरसाइकिल या साइकिल या पैदल खड़े हो जाते हैं। हमने उस पे लगा रखा है टिन का एक बनाकर, जब बिजली करे गर्जना, पेड़ के नीचे कभी न रहे। मोबाइल सेल्फी का इस्तेमाल नहीं करना है। द फ्लैशेस अट्रैक्ट लाइटनिंग। 5 सेकेंड रूल, नेचुरल वार्निंग, अवेयरनेस। गांव में जो सब्जी बेचती हैं वो इस तरीके का छाता लगाती है, बिल्कुल नहीं लगाना। और अगर आप बिल्कुल फंसी गए हो तो इस तरीके से बैठना है, पैर को चिपका कर। ये लाइटनिंग सेफ पोजीशन है। हेड डाउन। कानों पे इसलिए लगाते हैं कि जो बहुत तेज आवाज होती है उससे कान के पर्दे ना फटे। ये पैर की एड़ी इकट्ठी होनी चाहिए जिससे कि बिजली सीधे पार कर जाए, स्टेप वोल्टेज ना क्रिएट हो। फुटबॉल के मैदान में भी आप लाइटनिंग अरेस्टर लगा सकते हैं और खेल सकते हैं। खुला फुटबॉल का मकान खतरनाक है। परसों ही बोकारो में विकास नाम की एक लड़के की मौत हो गई। स्कूल, होम, कार, ये सारे सेफ हैं। बस सेफ है। घर की खिड़की, दरवाजे बिजली गिरने के दौरान खुला न रखें, इससे आपको नुकसान हो सकता है। घर के अंदर नल के से पानी का इस्तेमाल न करें। लाइटनिंग रॉड जरूर लगाएं। इन सब चीजों के साथ मैं मानता हूं 100% लाइटनिंग इज अवॉइडेबल डिजास्टर। एनी क्वेश्चन? I'll be happy to answer. Over to you, sir. सर हम लोग बारिश जब भी होती है तो पेड़ के नीचे चले जाते हैं, क्या पेड़ के ऊपर लाइटनिंग कंडक्टर नहीं लगाया जा सकता है? बिल्कुल लगाया जा सकता है, आप बिल्कुल लगा सकते हैं। कई जगह पे हैं जो बड़े बड़े पेड़ हैं, उनके नीचे लोग चाहते हैं कि मैं लगाऊं, तो आपको ये करना पड़ेगा जैसे मैंने आपको, मैं दिखाता हूँ। ये जो स्लाइड है, ये जो लाइटनिंग अरेस्टर है, इसका पोल है, इसको आपको पेड़ से ऊपर करना पड़ेगा और उसके ऊपर आपको लाइटनिंग कंडक्टर या अरेस्टर लगाना पड़ेगा। तो वो सीधा डाउन कंडक्टर के थ्रू अर्थिंग हो जाएगी और वो पेड़ बचेगा। तो कई जो दुर्लभ पेड़ होते हैं, स्पेशली कल्पतरू वगैरह के वृक्ष हैं, उनके नीचे कई जगहों पे लोगों ने लगाया है और उसका लाभ हुआ है। सर, ताड़ के पेड़ होते हैं, हाँ सर, उस पर माने वो क्या लाइटनिंग कंडक्टर का काम करते हैं या ऐसे ही है जो हम लोग सुनते हैं? देखिए, जहाँ तक हमारे पाम ट्री हैं, पेड़ों के अंदर भी कई तरीके के पेड़ होते हैं। अभी मैं उड़ीसा में गया था समुद्र के किनारे, तो जो जिन पेड़ में ज्यादा पानी, वाटर परसेंटेज ज्यादा रहता है, वो अच्छे कंडक्टर का काम करते हैं। जिन पेड़ जो सूखे होते हैं उनमें वो उतने अच्छे कंडक्टर का काम नहीं करते। पाम ट्री हैज वेरी हेवी कंटेंट ऑफ वाटर and they are taller also, so they absorb, they attract lightning and they absorb also. So generally पुराने जमाने में जो चीज होती थी, बड़े बड़े खेत होते थे और खेत के चारों ओर लोग पाम ट्री के 1-2 रो लगा के रखते थे और कोस्टल रीजन में भी रो लगा के रखते थे। तो उससे होता था कि एक पेड़ में अगर लगा तो दूसरे पेड़ तक में एब्जॉर्ब हो जाता था और ग्राउंड करंट स्प्रेड नहीं करती थी। और जो पेड़ होता था उसके चारों ओर गोल ट्रेंच बना दिया जाता था और उठा दिया जाता था। तो उसके कारण जो ग्राउंड करंट रेडियली चारों ओर फैलती है वो फैलती नहीं थी, तो वो वहीं तक रेस्ट्रिक्ट रह जाती थी। तो इसीलिए पाम ट्री या पेड़ों का लगाना, पुराने घर में जितने भी घर आप देखेंगे तो घर के आगे या पीछे दोनों ओर पेड़ लगे होते थे। बेसिक एम वाज टू अट्रैक्ट लाइटनिंग और उसके चारों ओर ट्रेंच बना देते थे जिससे कि वो रेडियल जो स्प्रेड होता है चारों ओर, वो स्प्रेड ना हो। तो ट्री आर सपोज टू बी अ गुड अट्रैक्टर ऑफ लाइटनिंग and you can also dissipate the energy within the same area and prevent the damage to the house. In fact, बिहार में एक और कहावत है, एक धरोहर नाम की किताब भी निकाली गई थी 2017 में, जिसमें ये कहा जाता है कि घर के ऊपर अगर आप तुलसी का पेड़ लगा देंगे तो उस पे लाइटनिंग नहीं गिरती है। और पूर्णिया के कुछ घरों का जिक्र भी था
उसका मैंने डिटेल में स्टडी किया था। तो उस घर के आसपास नीम के पेड़ थे, बड़े बड़े बरगद के पेड़ थे, तो जनरली लाइटनिंग हुई। मैंने कुछ पिक्चर भी लिया, तो उन पेड़ों पे लाइटनिंग गिरी है। सिर्फ घर के ऊपर तुलसी का पौधा रखने से उसकी अर्थिंग नहीं हो पाती। It is the basic fundamental. You catch the electricity in the sky through a down conductor, you earth it, you bury it inside the earth. A second option, the arrestor which comes, arrestor is an active device. In the arrestor, there is a emitter. So there is a smart sensor. If there is a negative strike which is coming, it will attract. Through the down conductor, it will earth. But if it is a positive strike, the ladder is reflected back into the atmosphere. So most of the high-rise building, that is the Burj Khalifa, Eiffel Tower, World Trade Center, Parliament House in India, the Qutub Minar, there we have the smart lightning arrestor, which is at protecting you from both, from the negative strike as well as the positive strike. मैं समझता हूँ सर आपकी सवाल का मैं जवाब दे पाया। हेलो, ये जो हाउस टॉप का 45 डिग्री एंगल होना आवश्यक है लाइटनिंग के लिए, लाइटनिंग से बचने के लिए। Yes, sir. Generally it is 45 degree. It's a effective device and it protects the 45 degree angle area. So if you have raised it for say 40 feet height, so 40 feet radius area, you can take it as if it is protecting. If your house stretches more than 40 feet, it means you should give a higher, height to the lightning conductor, sir. हमारे पार्टिसिपेंट की कोई अगर क्वेश्चन के पास हो तो वो अपने को अनम्यूट कर लें। और के वर्मा साहब, प्लीज गो अहेड। के वर्मा सर, प्रणाम। आप के वर्मा साहब कैमरा ऑन कर लें, अपने को अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। सर नमस्ते। नमस्ते। हेलो। नमस्ते। नमस्ते जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही। अच्छा, मेरा नाम के वर्मा है और आपका प्रेजेंटेशन वाज टू गुड और बहुत इंफॉर्मेटिव है। और मैं भी इसी फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ और पिछले 22 वर्षों से मैं लाइटनिंग प्रोटेक्शन पर ही काम कर रहा हूँ। और मैं एक सिर्फ ऐड ऑन करना चाहता हूँ, सप्लीमेंट करना चाहता हूँ कि लाइटनिंग कंडक्टर या लाइटनिंग अरेस्टर जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही उसकी ग्राउंडिंग भी इम्पोर्टेंट है। आपने लाइटनिंग कंडक्टर या अरेस्टर लगा लिया, दैट मीन्स यू आर इनवाइटिंग द लाइटनिंग, लेकिन अगर उसको आप पाथ नहीं देंगे, ग्राउंड नहीं करेंगे, तो इट इज मोर डेंजरस, इजंट इट? एब्सोल्युटली सर। मैंने अगर उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, अगर अर्थिंग की रेजिस्टेंस हाई हो जाएगी और लाइटनिंग हो गई छत पर, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। एब्सोल्युटली सर। इनफैक्ट जहां लाइटनिंग इंस्टॉल होती है तो अर्थिंग के ऊपर एक विंडो इंस्पेक्शन पैनल होता है और हमेशा लाइटनिंग वहां का सॉइल रेजिस्टेंस मेजर किया जाता है। अगर सॉइल रेजिस्टेंस हाई हो जाएगी तो लाइटनिंग जमीन में नहीं जाएगी और फिर वो ग्राउंड करंट के रूप में चारों ओर फैलेगी, घर में आग लग सकता है, सारी वायरिंग जल सकती है, बहुत डैमेज होता है। तो ये भी हम लोग देखिए, हम लोग तो लाइटनिंग को तो स्टॉप कर नहीं सकते, वी कैन नॉट, इट्स अ नेचुरल। हम लोग उससे प्रोटेक्शन ले सकते हैं और प्रोटेक्शन का दो ही उपाय है, एक है अवेयरनेस और दूसरा है सिस्टम को इंस्टॉल करना। तो पुराना जो सिस्टम है, मैं समझता हूं जैसे फ्रैंकलिंग टाइप जो है रॉड जो है, इट इज अ कंडक्टर। अगर उस कंडक्टर पर लाइटनिंग होगा तो वो डिसिपेट करेगा ग्राउंड में। अरेस्टर इज अ बेटर ऑप्शन, वो जैसे ऊपर ही 100 मीटर रेडियस में वो अट्रैक्ट कर लिया, अरेस्ट करके उसको ग्राउंड कर रहा है। तो इन स्पाइट ऑफ 4, 5, 6, 10 लाइटनिंग कंडक्टर, अगर 1 अरेस्टर लगा लें
तो वो शायद ज्यादा बेनिफिशियल है इंडस्ट्रीज के लिए और स्कूल के लिए, और जिनका एरिया बड़ा है, मैं ऐसा समझता हूँ। और बट अवेयरनेस तो करना है। हमारा एक और वर्मा केयर फाउंडेशन है, जिसमें हम लोग लाइटनिंग प्रोटेक्शन के अवेयरनेस का प्रोग्राम भी करते हैं। वी आर डीलिंग इन दिस। और हमारी कंपनी है अर्थिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, शायद आपको कहीं मिला होगा नाम, आई डोंट नो, बट वी आर इन द लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपकी बात सुनकर। आपका जो प्रेजेंटेशन है, अगर वो प्रेजेंटेशन मुझे आप शेयर कर पाए तो शायद यूजफुल होगा अवेयरनेस के लिए। बहुत सारा उसमें डाटा है, बहुत अच्छा है, और मैं उसके इस्तेमाल करना चाहूंगा, तो अच्छा रहेगा ये। बहुत आप क्या समझते हैं? योर बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मेरा जो प्रेजेंटेशन है ये लोगों के लिए है, तो मैं डॉक्टर राजन सिन्हा सर को ये प्रेजेंटेशन दे दूंगा, आप उनसे ले लीजिएगा जी। और अपना अगर नंबर भी अगर शेयर करें मुझसे तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर। हम लोगों ने कई बड़ी बड़ी, अभी गुजरात में स्पेशल इकोनॉमिक जोन लॉन्च किया, स्पेशल केमिकल इकोनॉमिक जोन लॉन्च किया वो भरूच में, और वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा केमिकल स्पेशल इकोनॉमिक जोन आ रहा है। 20 लाख $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे, और उस पूरे जोन का लाइटनिंग प्रोटेक्शन एनालिसिस उन्होंने हमें करवाया। तो और मैं ये भी बताना चाहूँगा सर कि ये जो लाइटनिंग प्रोटेक्शन की जब बात करते हैं, तो हम लोग जनरली घर में क्या करते हैं कि अर्थिंग करवा लेते हैं, कहते हैं हम लोग अर्थिंग तो करवा लिए, या ऊपर एक रॉड लगवा लिए। तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, एयर टर्मिनल, डाउन कंडक्टर, अर्थिंग। और अर्थिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जहाँ पे रॉकी स्ट्रक्चर है, जहाँ पे हाई रेजिस्टेंस है, वहां पे आपको ट्राइपॉड अर्थिंग करानी पड़ती है एक। तो इस तरीके, बिकॉज जहाँ रॉकी स्ट्रक्चर है, लैटराइट रॉक्स हैं, क्वार्जाइट रॉक्स हैं, तो वो सब में काफी ज्यादा अलग तरीके की अर्थिंग डिजाइन। इसीलिए मैंने कहा रिस्क असेसमेंट, सॉइल रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल सेंसिटिविटी टेस्ट, ये तीनों इंपॉर्टेंट। हम लोग घर बनाते हैं तो सॉइल स्ट्रेस कंप्रेशन टेस्ट कर लेते हैं, बट हम लोग इलेक्ट्रिकल सेंसिटिविटी टेस्ट और सॉइल रेजिस्टेंस टेस्ट नहीं करते हैं, और हम लोग बिना उसके हम अपने घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगाते हैं, तो उससे नुकसान होता है। थैंक यू। हमारे पास एक दो स्पीकर और हैं, और हम लोग उनको भी सुनना चाहेंगे। तो पार्टिसिपेंट्स का कोई क्वेरी होगा तो हम ईमेल आईडी शेयर कर देंगे। लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट मेरे पास है, और संजय जी डायरेक्टली इंटरैक्ट कर लेंगे। थैंक यू सो मच। डॉक्टर शोभन, प्लीज गो अहेड। सर नमस्कार। प्रश्नों की श्रृंखला का अंत हो चुका है। एक दो जिज्ञासा थी हमारी। एक जिज्ञासा तो ये कि क्या हम इलेक्ट्रिसिटी जो अपने घर में लगाते हैं उसको सेव करने के लिए अर्थिंग करते हैं, क्या उससे हम लाइटनिंग को बचाने के लिए जो अर्थिंग करते हैं उससे जोड़ा जा सकता है या नहीं? नहीं सर, वो अलग है सर, और ये अलग है सर। इसके लिए सर आपको इन सीरीज एयर टर्मिनल, डाउन कंडक्टर और सेपरेट अर्थिंग बेस्ड ऑन योर सॉइल रेजिस्टेंस, घर का सर किस तरीके के इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल है और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स क्या आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके ऊपर सर आपको देख के, इनफैक्ट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पैरामीटर्स, देयर आर मोर देन 72 पैरामीटर्स व्हिच वी टेक before deciding the type of earthing and the lighting protection system. There is a proper IC guideline, sir. I can share that guideline. आभार। It is not a rocket. आपके तथ्यपरक प्रस्तुतिकरण से यह स्पष्ट हो गया कि लोगों ने आपके प्रस्तुति का विस्तार चाहा है, और हम लोग अभिभूत हुए आपके तथ्यपरक विचारों से। वक्ताओं की हम आमंत्रित करना चाहेंगे प्रोफेसर डॉक्टर रासबिहारी प्रसाद सिंह, जाना पहचाना नाम, वाइस चांसलर रहे पटना यूनिवर्सिटी और नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। पुस्तक लेखन में पुस्तकों का ढेर अनगिनत। अब मैं बगैर समय गवाए आमंत्रित करना चाहूंगा प्रोफेसर रासबिहारी सिंह
साहब को, सर प्लीज। Sarvan ji, धन्यवाद for inviting me to present my views on this platform. सबसे पहले तो मैं I must express thanks to Colonel Sanjay Srivastava ji, experts on this topic, and who presented a very detailed and very informative presentation here. And I'm sure all those who are on this platform have learned many things, including myself, also learned many such things which are not before us earlier. So now I'm also thankful to Dr. Rajan Sinha inviting me here in this programs, and thanks to Rajan ji and the chair of today's this program, Professor R.P. Singh Rahi ji, who is also my teacher, and all others present on the gas and on this platform. Our friends, Colonel Sanjay Srivastava ji had presented almost everything, and practically he left nothing for me or for us. But then this is a very important topic, and the importance of the topic is that this was not a disaster, practically not a disaster if you look into early part of 20th century or before Second World War. It was not a crisis. And earlier it was happening, but not on this scale, which needs attention or disaster management approach. I'm drawing your attention, friends. I've taken one sloka of Rig Veda, where lightning is discussed and appreciated as if it is kind of blessing to the society. In the Rig Veda, Mandal 1, Suk 38, Vasre Vidyun Mimati Vatsam Namata Shakti. इसका अर्थ ये है कि ये जो साउंड होता है, लाइटनिंग साउंड्स, ये ठीक उसी प्रकार है जैसे गौ माता अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए आवाज निकालती है। तो ये साउंड जो है संपूर्ण पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को एक चेतावनी है कि आप जीवन में आगे बढ़ें, तरक्की करें, सोए ना रहें। और lightning sound is a blessing, and the lightning also gives many benefits or things to the society. अभी संजय जी ने भी 2-3 पॉइंट बताई, बहुत महत्वपूर्ण थी। इसमें खुद लिखा है कि यह फसलों के उत्पादन में लाभदायक है। ये it gives fertilizers to the crops. तो ये undissolved नाइट्रोजन पार्टिकल या अनयूजेबल नाइट्रोजन पार्टिकल्स को लाइटनिंग जो है डिसॉल्व कर देता है, एंड दैट बिकम द पार्ट ऑफ द सॉइल और अल्टीमेटली बेनिफिट्स टू द क्रॉप्स और रूट्स ऑफ द क्रॉप्स। तो ये, और इसमें ये भी कहता है कि ये सुख शांति लाने का एक प्रतीक है। बस बोलिए। But friends, the issue is that it was ancient period, it was Vedas periods when this incident was welcome. But again, I'm telling you, this kind of incidents frequency has made phenomenal rise now. Earlier it was not so. That is the point. I think Sanjay ji also will agree with me that we all concentrate and we need to address this issue. Why the problem is increasing as a disaster in the present situation. So I'm just drawing your attention to me, and I think you all will agree with me that the incidents or the increase of lightning incidents, horrible incidents, disastrous incidents is definitely related to changes in the climatic properties, climatic conditions coming after Second World War, first slowly, not so rapidly. Mr. Srivastava ji had presented a spatial pattern of distribution all over the world. I will just like add to you
that if you look the lightning spatial pattern, then you will find earlier its incidence was nominal, almost non-recordables in Northeast India, Himalayan India, coastal India, and if you take the global pattern in the equatorial belt, in the low latitude and high latitude belts. Now, the problem is that it has spread up everywhere. Even the equatorial areas, it is taking place in the Southwest Africa, particularly in the Nigeria, Gabon, and all those areas. It is challenging issues. Presently, every year, almost 1400 million incidents of lightning is taking place. And out of that, 18 million in India. So it's 18 million in India. So India definitely one of the major affected countries. And monsoonal behavior change or change in the behavior of monsoon definitely as an important category. You, Sanjay Srivastava, you have rightly taken the Kal Baisakhi period, pre-monsoon period, monsoon period, post-monsoon period. Earlier, if you take the earlier situation, lightning was more acute during the Kal Baisakhi and the pre-monsoon period. When the deep monsoon had come, particularly the months of Sawan, late Sawan and Bhado, or the late July and August, that was the period when we don't have much. And you have rightly said that farmers have empirical estimation of the lightning. So when you say the low altitude cloud, dark cloud, thick cloud is covering the entire sky, then chances are less. But if the clouds apparently show two types or altitudinal differences are there, then there are chances of the incidence of lightning. So now what we say, like the lightning incidents, if you say, even the coastal India, Goa last year, Goa has the maximum lightning, more than 300% increase is reported. Madhya Pradesh, these are the states. Even in the Uttarakhand, these are the areas where lightning is increasing so rapidly. Earlier, if you take this, you have all, Mr. Srivastava has also mentioned, earlier the hub or the main consideration area of lightning was eastern India, not the northeast, but eastern India, Odisha, Jharkhand, some parts of Chhattisgarh, Bengal Plateau, these are the areas. Now it has spread over the entire country. Friends, this climate change, you see the lightnings depend upon three important things. One is the moisture content, second is the temperature, third is the air condition. So whether the air is stable, unstable, moisture differences are modes, thermal or the temperature difference mode, then the two sets of clouds or two volumes of moisture-laden air have greater chances of collisions or greater chances of creating electrical discharge. So that is to be studied more seriously at the Climatic Research Center in the context of the present changes apparently rapidly coming in the weather and climatic conditions. So this, how is it happen? You see what happens, you see the surface thermal impact is more, convective currents are more. So when the convective currents are more, the lower part, the upper part there is the moisture-laden wind and lower part is dry, then these two air contacts of the two different properties cause generation of lightning or electric discharge affecting, you see, the system. So, friends, it is naturally the rural area is more affected. Mr. Srivastava mentioned that in Bihar, 96% incidents occur in rural, 4% urban. So even in the 4%, I'm telling you it is more because less than 2% geographical area of Bihar is urban. So on the 2% area, if 4% occurrence is, then that is more.
So it is not the question urban, but definitely urban areas with all the tall buildings nowadays have the lightning arresters or the protective measures are being taken. Rural area, whether Bihar or the most part of India or developing countries, awareness is less. You have discussed in different awareness, preparedness is less, and economic compulsion is more. You see, poor would go to farm once the rain occurs. So agricultural activities remain on peak during the raining period in the whole of South Asia, Southeast Asia, and farmers, you say, come out in the farm. The plantation, paddy plantation is the main economy of the region that needs more labor, intense labor, large number of females for transplanting the paddy. So females' death is more. That is one factor. And so once female goes from the poor family, not much literate family, the babies with the female also go in the field. Compulsion is that poverty is there, hunger is there. If she or they are not working in the farm of farmers or landowner farmer, even their own small plots, then how the family would survive? So you may bring awareness without bringing change in the economy, without bringing a betterment of livelihood or life system, there may not be much impact toward the poor. However, you see, like the Indra Awas Yojana, different Awas. I think you have also stated government's scheme must be in the way that low-cost house should also have protective inputs so that the poor's house, new coming houses, slum area development houses, they also get this type of protection or their vulnerability would definitely reduce. That may be one of the ways keeping the society free from that danger. One important also, Mr. Sanjay Srivastava and they all there on the platform say that meteorological research needs not only forecasting. Forecasting is made. How would you rural people be made aware at the present? To some extent is a problem, but important that there should also be research on how to bring reduction in the incident. Is it possible? Like the artificial rain is possible. Just one I'm telling you, if the two properties are there and your meteorological maps say they're coming to collide, more lightning, disasters are possible, then would it be meteorologically or technologically possible to diffuse the two property areas and to bring reduction in the property disparity? That would reduce the lightning incident. So many more issues are here, but definitely a very superb, wonderful, full of presentation was here. I'm again expressing thanks to you, sir.
monsoon change of behavior has also become important. Change of behavior. Change of behavior has also become one of the causes. Recently we have found 100 hours monsoonal rain. Should I continue? 100 hours monsoonal rain are taking place. Sir, can I answer Dr. Professor Ras Bihari, sir? Can I say something, sir? सर क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? आपकी आवाज नहीं आ रही सर माइक पे। आप बोले, जो बोलना चाह रहे हैं बोले। हाँ, मैं सर बताना चाहूँगा कि भारत सरकार ने एक नेशनल लाइटनिंग रिस्क प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन प्रोग्राम डेवलप किया है और हमारे प्रधानमंत्री ने उस पर 750 करोड़ रुपए का अभी बजटीय प्रावधान किया है। हम लोग सर एक अंतर्राष्ट्रीय लाइटनिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर सेटअप कर रहे हैं। उसका मुख्यालय दिल्ली में होगा और उसका रिसर्च टेस्ट बेड 5 रीजनल सेंटर हैं सर, और एक अभी बालासोर में सबसे पहला उस पर अभी काम चल रहा है। तो काफ़ी रीजनल स्टडीज़ होंगी और लाइटनिंग जैसा आपने बोला सर, डिटेक्शन पे तो इम्प्रूवमेंट हो ही रही है सर। हमारा सबसे ज़्यादा जो जोर है, तवज्जो है, वो डिसेमिनेशन पे है सर, हाउ टू ऑपरेशनलाइज। और हम लोगों ने इसका ट्रायल करके राजस्थान स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ, जैसे हमारे रडार या सेंसर में इसका एपीआई जनरेट होगा सर, वैसे ही सर हमने पंचायत में जैसे सरपंच के घर पे एक डंडे पे माइक लगा दिया और कैमरा लगा दिया है। ये इंटरैक्टिव है, तो वहाँ अनाउंसमेंट होगी जिस भाषा में आप चाहेंगे, और कंप्लायंस भी आप देखेंगे सर। तो उससे ये है कि अगर कंप्लायंस नहीं हो रही है, खास करके खेत वगैरह में जैसे अगर वो लग गया तो वो दिखेगा कि ये अनाउंसमेंट हुई, लोगों ने कंप्लायंस नहीं किया। तो हम लोगों ने कम्युनिटी वॉचमैन सिस्टम किया है सर, कि कम्युनिटी से कोई लोग जाके वहाँ पे उन्हें फिजिकली इंटरवीन करेंगे। तो इस तरीके से, और लाइटनिंग प्रोटेक्शन पे भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं सर। हम लोगों ने कुछ गाँव को, देवघर जैसे झारखंड के बगल में है, बाबा धाम को लाइटनिंग सेफ बनाया है। तो इस तरीके से
प्रोटेक्शन के लिए इंडिया में सबसे बड़ी इशू है सर कि हमारा जो सेंट्रल CPRI है, सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसकी टेस्टिंग कैपेसिटी सर अधिकतम 80 किलो एम्पियर है, जबकि ये जो बिजली गिर रही ये 180, 200, 300 किलो एम्पियर तक जा रही। तो अभी हम लोग सर एक हाई वोल्टेज टेस्टिंग लैब IIT दिल्ली में बना रहे हैं, जिससे कि प्रॉपरली जो मैन्युफैक्चरर होंगे उनके सारे मटेरियल को हम सर रेगुलेट करेंगे और सर्टिफाई करेंगे। नहीं तो होता है कि अगर आप कुछ खरीद के बाजार से लगाए, बिजली गिरी, वो मेल्ट कर गया और घर में ही आग लग गई या करंट लग गया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाई वोल्टेज टेस्टिंग लैब हमारे कंट्री में सही तरीके का लगे। तो उसमें भी करीब 110 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है और हर जगह नहीं बनाया जा सकता। और जो हाई वोल्टेज टेस्टिंग लैब होता है सर, उसमें हाई वोल्टेज की टेस्टिंग नहीं, हाई वोल्टेज इंपल्स की टेस्टिंग होनी चाहिए कि पीक पे कितना जाता है और कितनी जल्दी नीचे आता है। क्योंकि अभी लाइटनिंग स्ट्राइक, सक्सेसिव स्ट्राइक्स बहुत हो रही सर। तो पहले जो 8/20 का पैरामीटर था, उसको अभी हम लोगों ने 10/350 कर दिया है। 10 सेकंड से पीक पे जाके 350 एम्पियर करंट कितनी जल्दी नीचे आता है। तो ये जो पीक इंपल्स वोल्टेज टेस्टिंग है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, और इस पे अभी काम चल रहा है। बट ग्रास रूट लेवल पे दोबारा मैं बोलूंगा कि हमें बहुत महंगी चीजों की जरूरत नहीं है। सिंपल फ्रैंकलिन रॉड लगाए सर, हर घर के ऊपर, स्कूल के ऊपर, खेत के ऊपर, और आराम से उसको तैयार किया जा सकता है। दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस। हम लोगों ने तो इनोवेटिव डिवाइस भी बनाया कि घर की थाली की प्लेट ले लीजिए, उसको लोहे की पाइप से नीचे कर दीजिए, ट्रेडिशनल चारकोल है, सैंड है, और आप इन तीनों को मिला के, सैंड, डस्ट और सॉल्ट, तीनों मिलाकर, चारकोल मिलाकर आराम से लोकल अर्थिंग भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन वो वन स्ट्राइक वो सफर करेगा, जब सक्सेसिव स्ट्राइक होगी तो उसको बचाएगा नहीं। तो लोकल डिवाइसेस हैं, और उसे हम लोग लोगों को ये डिवाइस को कैसे लगाना और मेंटेन करना सिखा दे तो लोग अपने आप कर लेंगे सर। मेन है हम लोग कम्युनिटी साइंस की बात करते हैं, लेकिन कम्युनिटी को नहीं हम ट्रेन कर रहे हैं। जरूरत है सर कम्युनिटी को ट्रेन करने की, और छोटी छोटी सिंपल चीजें बताएं कि आसमान में काला बादल दिखा है तो क्या करना है, कैसे बिजली गिरेगी तो अपना लाइटनिंग अरेस्टर लगाना है। लोग अपने आप करेंगे। हम लोग सब लोग अपना हनुमान जी का झंडा लगाते हैं ना सर, सिख लोग निशान लगाते हैं ना, तो उसी को लाइटनिंग अरेस्टर कंडक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इट इज नथिंग रॉकेट साइंस। वी नीड टू सिंप्लीफाई साइंस and popularize the science in the rural area. That is the catch, sir. That's all, sir. हम एक दूसरी बात उठाया था, हमको लगा आप उसको I was talking of the reduction in the incidence of lightning. ये तो आपका reduction in the disaster impact पर। तो जैसे वो जो मैंने कहा कि मेट्रोलॉजिकल रिसर्च का वो डायरेक्शन हो, so that डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर जो वो कैसे डिफ्यूज हो, और इतने बड़े बड़े मेजर इंसिडेंट या फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट जो बढ़ गया वो कैसे कम हो, ये भी एक एरिया है जो कि अनटैप्ड है। उस पर भी रिसर्च की जरूरत है। इस तो मैंने आपको कहा था ध्यान। Yes, sir, और वो तो आप जो कह रहे हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो बिल्कुल इंडक्शन के लिए सर वी डोंट हैव अ लैब नाउ। फर्स्ट लैब वी आर सेटिंग अप एट IIT चांदीपुर। ये एरिया जो है अनटच्ड है या यस सर। हमने अभी, धन्यवाद सभी को, हमने अभी अपने प्रमुख अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर रासबिहारी प्रसाद सिन्हा जी को सुना, और उन्होंने चिंता जताई कि हम क्यों नहीं समुदाय विद्यालय या इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग की ओर जा रहे हैं, हमें जाना चाहिए। यह उनकी हार्दिक चिंता थी, हम सभी उससे अवगत हैं, और हम लोग भविष्य में इसे इसके लिए काम करेंगे। हम आश्वस्त करते हैं आपको। हम अपने अब संरक्षक प्राचार्य, भूतपूर्व प्राचार्य पटना महाविद्यालय पटना, राही सर के पास लिए चलते हैं आपको। वो अपने ओजस्वी संदेश से हम सभी को अभिभूत करें। सर। सर्वप्रथम इस वेबिनार कार्यक्रम में जो लोग यहाँ केंद्र पर उपस्थित हैं और बाहर से जुड़े हुए हैं, और खास करके
कर्नल साहब, मैं सबों के प्रति बड़ा आभार व्यक्त करता हूं और सबको साधुवाद भी देता हूं कि इतनी देर तक हम लोग इस वेबिनार में बैठे रहे, कर्नल साहब की गूढ़ बातें सुनी और इस क्रम में बहुत सुनने को भी मिला। इसलिए मैं अपनी ओर से और संस्थान की ओर से सर्वप्रथम, इसके पहले कि मैं औपचारिक रूप से बातें कहूं, मैं सबों के सामने नतमस्तक हूं और आप सबों को धन्यवाद देता हूं। इस कार्यक्रम को संचालित करने में प्रोफेसर जीपी सिन्हा, सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट ने भगीरथ प्रयत्न किया है। इसलिए सर्वप्रथम मैं इस संस्थान के निदेशक राजन सिन्हा जी को और संस्थान से जुड़े हुए कर्मियों को, जिनमें शर्मा बाबू हैं, सुधाकर जी हैं और अन्य कर्मीगण भी इसमें जुड़े हुए हैं, उन सबों को धन्यवाद देता हूं क्योंकि उनके ही भगीरथ प्रयत्न से यह कार्यक्रम संचालित हो सका है। आज इस अवसर पर पूर्ण श्लोक प्रोफेसर गणेश प्रसाद सिन्हा जी की 101वीं जयंती है। इस अवसर पर मैं अपने गुरु को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और यह भी उनसे आशीर्वाद मांगता हूं कि हम सभी को वह इसके लिए अपना आशीर्वाद दें, संस्थान को भी दें कि संस्थान अपने कार्यों में प्रगति करता रहे। जैसा आपने सुना होगा, शर्मा बाबू ने प्रारंभ में ही इस संस्थान के बारे में बहुत महत्वपूर्ण चीजें बतलाई और इस विषय के चयन के बारे में भी बताई। सुधाकर जी ने संक्षिप्त ही सही लेकिन बहुत ही विस्तृत ढंग से संस्थान के विभिन्न क्रियाकलापों की चर्चा की और यह भी चर्चा की कि अब वह राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जो अध्ययन करते थे उसको सिटी स्तर पर ले जा रहे हैं और इसके लिए वह सिटी डिजास्टर मैनेजमेंट कम से कम 2 महत्वपूर्ण शहरों की योजना को बनाने में संलग्न हैं। इसके साथ ही वह अन्य कार्यों को भी संपादित करते हैं और इसके निदेशक बराबर इस कार्य में तल्लीन रहते हैं कि कौन कौन सी नई चीजें हों। मैं उन्हें विशेषकर धन्यवाद देता हूं। हम जानते हैं कि अभी जिस व्यवस्था में हम लोग वेबिनार कर रहे हैं यह भी एक ब्लेसिंग ही है और इसी का विकास कोरोना काल में हो गया। जब हम सभी प्रतिबंधित थे तो वेबिनार का प्रचलन बहुत ही अधिक शुरू हुआ और आज देख रहे हैं कि वेबिनार के माध्यम से ही कर्नल साहब ने हम सबों को उन सभी सूक्ष्म बातों की जानकारी दी जिनकी बड़ी आवश्यकता है। यह इसी के माध्यम से संभव हो सका है, तो वह इसमें तल्लीन रहते हैं बराबर और इसी क्रम में इसका आयोजन भी किया गया। आज के मुख्य वक्ता जैसा आपको पता ही होगा कर्नल संजय श्रीवास्तव जी हैं। मैं उनका अभिवादन करता हूँ, उनके शासक हूँ और उनके नाम में जो चीजें जुड़ी हुई हैं जिसमें उनका हाथ नहीं है वो तो पेरेंट ने दिया होगा और कार्य से कर्नल जुड़ा है उनके कार्य से, तो यह तो एक है प्रधानता। उनका नाम भी संजय है
और आप जानते हैं कि संजय की क्या भूमिका होती है। जो लोग भी पढ़े होंगे महाभारत या गीता, तो आप जानते होंगे कि इस नाम की क्या महत्ता है। और मैं बतलाऊं, मुझे बड़ी प्रसन्नता है और मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं संजय जी कि मैं आपके गांव गया हूं और पूर्ण श्लोक विपिन बाबू आप जानते होंगे, उनसे मैं काफी परिचित था जब प्रकाश नारायण जी के आंदोलन के पहले भी और बाद भी। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप उनके गांव के हैं और पूरे देश भर में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और मैं चाहता हूं कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसी स्तर से, युद्ध स्तर पर धूम मचाएं। मैं आपसे कहूं, आपके व्याख्यान से मैं पूरा सुन रहा था एक विद्यार्थी होने के नाते, क्योंकि मैं शिक्षक रहा हूं तो शिक्षक सबसे पहला विद्यार्थी होता है। आपके पूरे भाषण को मैं आपको बताऊं 3 पृष्ठों में मैंने नोट कर लिया है समय के साथ। और समय आपको आवंटित था 50 मिनट, आपने लिया 57 मिनट। यह एक बड़े अच्छे शिक्षक और वक्ता की विशेषता है। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 57 मिनट के बाद भी हम जिज्ञासु हैं कि आप कुछ और कहते, तो यह बहुत बड़ी बात है। और अंत में जो प्रश्नोत्तर काल के बाद वर्मा साहब को जो आपने उनसे प्रश्नोत्तर हुआ जवाब दिया, माननीय रासबिहारी बाबू ने उनके व्याख्यान के बाद जो उनकी एक टिप्पणी थी उसके क्रम में जो आपने कहा, तो वह सब इसको एक इंगित करता है कि आप अपने व्याख्यान को कितना तक लंबित कर सकते हैं। तो मैं सभी के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। 2-3 बातें आपने बहुत महत्वपूर्ण कही है। समय कुछ अधिक हो रहा है, मैं चाहूंगा संक्षेप में बोल दूं, क्योंकि शिक्षक जब बोलने लगता है तो शायद उसको ध्यान नहीं रहता है। तो 2-3 बातें आपने बड़ी प्रमुख कही हैं जो मैं समझता हूँ। एक तो काले बादल घुंघराने वाले, इसको याद रखना बड़ा जरूरी है। यह जब हो तो देखिए तो सचेत हो जाइए। दूसरा कि 15 तक की गिनती, 1 से 15, यह तो बड़ा आसान है, यह बहुत आसान है। क्रियान्विति के लेवल पर आपने ठीक कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो यह फंड है, तो यह कंपनसेशन तो पीछे की बात है, प्रिवेंशन और मिटिगेशन के लिए जरूर फंड होना चाहिए। और हम इसकी सिफारिश करेंगे अपने यहाँ से भी, और इसके लिए एक जन आंदोलन भी चलाया जाना चाहिए कि सरकार इसके लिए प्रावधान करे। और आपने अच्छी बात बतलाई कि कई अन्य राज्यों में हमारे जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने अपने पैसे को इसमें दिया है, इसके लिए बिहार में नहीं हुआ है। आपने अपील भी की, हम लोग भी अपील करेंगे। यह हम लोगों के लिए एक बड़ी सीख की बात थी, क्योंकि यह फंड है तो इसमें जरूर जाना चाहिए। और रासबिहारी बाबू ने एक अच्छी बात, बहुत अच्छी बात कही, वो वेद की बात तो जो है सो वही है, लेकिन आपने भी कहा अवेयरनेस बहुत कम है, शहरों में नहीं है। अभी आपने वह कहा, वह बहुत रॉकेट साइंस की बात नहीं, रॉकेट साइंस की एक्सपेंडिचर की बात भी नहीं, बहुत साधारण बात है। 45 डिग्री एंगल पर और रोड और थाली से भी बनाया जा सकता है। तो आप मैं राजेंद्र नगर में रहता हूँ, राजेंद्र नगर में ही देख लीजिए ना कितने घरों में यह लाइटनिंग कंडक्टर अरेस्टर तो नहीं है। तो अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, गांव में तो नहीं है, पंचायतों में नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ आपने एक हम लोगों को भी प्रेरित किया था कि जीपी सिन्हा सेंटर भी इसका एक माध्यम बने और यहाँ एक केंद्र बने। मैं संरक्षक होने के नाते जरूर यह चाहूंगा कि आपके दिशा निर्देशन में जो भी हम लोग कर सकें, चैरिटी बिगिंस एट होम। इसलिए राजेंद्र नगर से ही पहले पटना के सभी मोहल्लों में, फिर अगल बगल के ग्रामीण इलाकों में, फिर ऐसे ही यह बात दूर तक जाएगी। जब यहाँ से शुरू होगी तो इसको शुरू करना चाहिए। और यह बहुत अच्छी बात होगी कि गांवों से लेकर के और शहरों तक जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, एक छोटी सी पुस्तक,
एक छोटी सी पुस्तक गागर में सागर जो हो, वह आपके व्याख्यान के आधार पर वह जरूर बनाया जाए साधारण शब्दों में, जिससे सभी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। यह बड़ा आवश्यक है, जो नहीं है। कॉलेजों में भी, विश्वविद्यालयों में भी, जनरल स्टडीज में भी इन्वायरमेंटल स्टडीज है, लेकिन लाइटनिंग पर जहां तक मेरी जानकारी है, मैं कई विश्वविद्यालयों की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच से जुड़ा रहा हूँ, आयोगों से भी जुड़ा रहा हूँ, लेकिन लाइटनिंग पर बहुत कम प्रश्न, ऐसी बातें मैंने नहीं अभी तक देखी हैं। इसलिए इसकी जानकारी सभी लोगों को होनी चाहिए और इस दिशा में हम लोगों का प्रयत्न होना चाहिए। मैं अपनी ओर से भी और संस्थान की ओर से भी यह चाहूंगा कि एक छोटी सी ही पुस्तक हो, 10-5 पृष्ठों की पुस्तक हो, लेकिन इसकी जानकारी मिले सभी लोगों को। बस हमारे बीच उस समय उपस्थित थे प्रारंभ में, उपस्थिति में जो हमारे चेयरमैन है इस संस्थान के प्रोफेसर RMP सिन्हा, वह अभी नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले मंच से वह गए हैं। मैं उन्हें भी उनसे भी आशीर्वाद, क्योंकि वह उम्र में हमसे बड़े हैं, तो उनका भी संरक्षण बने, हम लोगों को मिले, और मैं चाहूंगा कि वह सतायु हो, हम लोगों के बीच में रहें, उनका आशीर्वाद इस संस्थान को मिलता रहे। वह चेयरमैन है, मैं उनको भी साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हमारे वरीय सहकर्मी और पटना विश्वविद्यालय के, नालंदा खुला विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति रास बिहारी बाबू एक अपने ही विषय के नहीं, अन्य विषयों के भी वह विद्वान हैं, मनीषी हैं, पढ़ते रहते हैं, जिज्ञासु हैं। देखा ही आपने अपने भाषण के क्रम में, वह बहुत संक्षिप्त में ही, लेकिन वेद काल से लेकर अब तक की बातें उन्होंने अपना हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। तो रास बिहारी बाबू को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। हम लोगों के बीच एक और हमारे सहकर्मी साइंस कॉलेज के पूर्व प्राचार्य श्री बसंत कुमार मिश्र जी, उन्हें भी मैं अनुपस्थिति में उनको भी धन्यवाद देता हूँ और उनके प्रति साधुवाद व्यक्त करता हूँ। किसी कारणवश वह नहीं उपस्थित हुए हैं, लेकिन उसकी सूचना उन्होंने हमारे निर्देशक को दी थी और मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। हमारे और वरीय सहकर्मी जो बैठे हैं हमारे पास, श्रवण जी और सुधाकर जी, और नेपथ्य में मधु जो सब, और हमारे नेपथ्य में यह सभी कार्यक्रम जो वेबिनार संचालित करते हैं हमारे मास्टर से ही हैं। यदि यह नहीं रहते तो कम से कम मैं तो इतना तकनीक में आगे नहीं बढ़ा हूँ, तो हम तो शायद कुछ नहीं कर पाते। इसलिए इन लोगों को अधिक धन्यवाद है जो इतने सारे लोगों को हम लोगों के साथ जोड़ सके और इस कार्यक्रम को संचालित किया। इस कार्यक्रम में हमारे संस्थान के निदेशक के बड़े भाई रामशरण बाबू भी जुड़े हैं, उनके अनुज भी जुड़े हैं और उनके परिवार के भी कई लोग जुड़े हैं। तो मैं उन सबों को भी अपनी ओर से साधुवाद देता हूं और उनसे यह भी आग्रह करता हूं कि उनका स्नेह, उनकी श्रद्धा इस संस्थान के साथ बराबर बनी रहे। इस कार्यक्रम में जैसा कि मालूम है वह काफी पार्टिसिपेंट विदेशों से और यहाँ भी जुड़े हुए हैं। बर्मा साहब तो उसमें एक थे, उन्होंने अपनी जो अर्थिंग सिस्टम वाले, उन्होंने बड़ा समीचीन प्रश्न भी किया और अपनी बात भी बतलाई। वह काफी संस्थान भी वह चला रहे हैं, मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ और यह भी आशा करता हूँ उनसे कि सामर्थ्य बस जितना भी हो हम लोगों को इस अवेयरनेस कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। संजय जी को फिर मैं धन्यवाद दूं कि उन्होंने गागर में सागर भरा है। मैंने वह नोट कर लिया है, वह व्याख्यान तो मिल जाएगा, यहाँ नहीं भी मिलेगा तो हमने इतनी मटेरियल नोट कर लिया है कि उस पर मैं एक आलेख बना दूंगा। मैं उन्हें पुनः धन्यवाद देता हूँ। आप सभी जो उपस्थित हुए हैं उनको धन्यवाद देता हूँ। एक हम लोग के सारथी हैं संजीव, हमारे सारथी नहीं, इस संस्थान के भी सारथी हैं। जहाँ जहाँ लोग जाते हैं वह टीम के सारथी हैं।
वह यदि बंद हो जाए, टाइम खत्म। अब देखिए ना कैसे वह टाइम बीता है। 1 बजे का समय था, कुछ विलंब से हम लोगों ने शुरू किया था जरूर, लेकिन अब 1 बजे की जगह 1:50 हो रहा है। विलंब हुआ था 20 मिनट, हमने नोट किया है, लेकिन 1:50 हो रहा है। तो आप सभी मित्र इस कार्यक्रम में जुड़े रहे, इतनी देर तक जुड़े रहे, आप सबों को साधुवाद। और आप इस संस्थान से जुड़े रहिए और इस मूवमेंट को हम लोग आगे बढ़ावें। जय हिंद, जय भारत। हाँ, आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्षीय संदेश में प्रोफेसर डॉक्टर आरपी सिंह राय साहब, जो हमारे भी गुरु रहे हैं, आपने एक सूत्र में पूरे कार्यक्रम को पिरो कर रख दिया और हम लोगों को एक कर दिया। अब प्रोफेसर डॉक्टर रासबिहारी प्रसाद सिंह रचित 2 पुस्तकें इस संस्थान के लाइब्रेरी को समर्पित की जानी है और हम इस कार्यक्रम में सभी का सहयोग चाहेंगे। धन्यवाद सर। इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। धन्यवाद। अच्छा, इसको पकड़ करो बाबू। आप हाथ पकड़िए। हाथ पकड़ते हैं और इनका हाथ पकड़िए। चलो सब हो गया, सब इसमें पकड़ लो। मैं पूर्व कुलपति पटना विश्वविद्यालय श्री रासबिहारी बाबू को फिर से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 2 पुस्तकों का प्रणयन किया है। दोनों पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण है और गंभीर चिंतन के लिए सामग्रियां देंगी। माई आइडियाज एंड विजन्स। और दूसरा, यह बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, कुलपति की डायरी। इसकी एक प्रति उन्होंने संस्थान को समर्पित किया है। इसके लिए धन्यवाद। और आप सबों से अनुरोध है कि जब भी समय पावे यहाँ में, यह हमारी लाइब्रेरी में रहेगी और इसको पढ़ें। रासबिहारी बाबू को पुनः धन्यवाद इन दोनों पुस्तकों के प्रणयन के लिए और यहाँ पर देने के लिए। धन हो गया और तृप्ति भी हो गया यह पुस्तकालय। अब हम अपने निदेशक, संस्थान के निदेशक श्री राजेंद्र सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र सिन्हा से विनम्र आग्रह करेंगे कि अंतिम कड़ी धन्यवाद ज्ञापन का संपन्न करें। श्री सिन्हा। धन्यवाद श्रवण जी। अच्छे व्याख्यान के बाद धन्यवाद ज्ञापन एक बहुत कठिन कार्य है। कर्नल संजय श्रीवास्तव जी का ज्ञानवर्धन दिमाग में इस कदर उथल पुथल मचा रहा है कि मुझे धन्यवाद ज्ञापन करने में कठिनाई हो रही है। आई एम रियली इंडेटेड एंड ऑब्लाइज्ड संजय जी। मैं धन्यवाद ज्ञापन करने के पहले थोड़ा सा इस कार्यक्रम की पृष्ठभूमि में जाना चाहूँगा कि मैंने ये आइडिया कहाँ से कंसीव किया। मेरे एल्डर ब्रदर हैं, वो दिल्ली बेस्ड हैं, MTNL के चेयरमैन, महानगर टेलीफोन्स के चेयरमैन थे, CMD थे, RSP सिन्हा, रामचरण प्रसाद सिन्हा। एक दिन उन्होंने फोन किया कि अभी मैं BBC देख रहा था, हम लोग भोजपुरी में बात करते हैं, बोले कि बिहार में 20 लोग ठनका से मर गए। अब ये इमेजिन कीजिए, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, प्रबुद्ध हैं, और कंसर्न किस ढंग का है कि बिहार में 20 लोग ठनका से मर गए। जब हम हेडिंग बना रहे थे ठनका, तो सुधाकर जी ने ठनका बनाया, तो मेरे बेटे ने कहा अब वो पुणे बेस्ड है कि ठनका शायद हमको नहीं समझ में आ रहा, तो हम लोग लाइटनिंग स्ट्राइक उसके नीचे अंडरलाइन किए। तो ये बैकग्राउंड छोटा सा था। दूसरा, एक मेरा दोस्त है जो पटना का बहुत प्रबुद्ध बिजनेसमैन था, हथुआ मार्केट में उसकी बड़ी अच्छी दुकान थी, और एक दिन लाइटनिंग स्ट्राइक हुआ। हथुआ मार्केट पटना में, जो लोग बिहार से जुड़े हुए हैं वो जानते होंगे, पटना का बहुत पुराना
और आधा हथुआ मार्केट जलकर राख हो गया। और उसमें मेरे वो दोस्त की जो बहुत बड़ी दुकान थी, ही इज अ वेरी वेरी सक्सेसफुल पर्सन, और वो जल के राख हो गई और एकदम हाथ मलते रह गया। तो मन में उथल पुथल चल रहा था कि ये लाइटनिंग स्ट्राइक पर क्या कोई कार्यक्रम किया जा सकता है। अचानक प्रभात खबर में एक छोटा सा हाफ पेज का, छोटा तो नहीं बोलेंगे, हाफ पेज राइटअप आया जिसमें कर्नल संजय श्रीवास्तव जी का एक रेफरेंस था, इनका कोट था। तो मैंने आनंद विजेता से कहा कि ये संजय जी कौन है, मुझे परिचय कराओ इनसे। आई एम यंग गुरु मानता हूँ मैं आनंद विजेता को। 20 साल से वो मेरे सब्जेक्ट में, डिजास्टर मैनेजमेंट में मेरे साथ रहा है। मैं 1999 से हाई पावर्ड कमेटी, अनिल सिन्हा साहब उसके मेंबर सेक्रेटरी थे, उनके साथ जुड़ा, और आनंद विजेता उस वक्त से मुझसे जुड़ा हुआ है। उसने कहा कि मैं कर्नल साहब से अभी बात कराता हूँ, और बात करने के बाद आपसे ऐसा लगा जैसे कि मैं बहुत, हम लोग का एक पुराना परिचय है और हम लोग एक दूसरे को वर्षों से जानते हैं। शहर से आपने सहमति दी, आप कार्यक्रम किए। मैं फॉर्मली धन्यवाद देना लगता है जैसे बहुत छोटी बात हो। संजय जी ने आपने जो ज्ञानवर्धन किया ये बहुत अद्भुत है। मैं प्रोटोकॉल के तहत अब धन्यवाद ज्ञापन में आता हूँ। आज हमारे इस व्याख्यान माला जो मैं हम लोग सुधाकर जी, प्रोफेसर जीपी सिन्हा की मेमोरी में प्रत्येक वर्ष करते हैं। पिछले साल हम लोग पंचायती राज पर चंद्रशेखर प्राण जी का कार्यक्रम किया था। आज हम कार्यक्रम लाइटनिंग स्ट्राइक पर किए, और मेरे पिताजी के साथ जुड़े हुए एक प्रोफेसर जो कि उनके प्रति आदर का भाव रखते हैं, रासबिहारी बाबू को मैंने कहा कि सर इस तरह का एक कार्यक्रम कर रहे हैं, आप हमारे चीफ गेस्ट बने, और बड़ा आदर और मन से उन्होंने इसको सहमति स्वीकृति दी। पता नहीं सर आपको याद है या नहीं, 2008 में हम लोगों ने फ्लड पर एक कार्यक्रम नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में किया, और आप उस वक्त प्रो वीसी थे, और आपने जो उस कार्यक्रम में जब बताना शुरू किया तो वीएस दुबे साहब ने कहा कि हम लोग रासबिहारी बाबू से कम सुने। सर बिहार की नदियों पर आपका अध्ययन, आपकी जानकारी, उस वक्त से ही हम लोग ज्योग्राफर के रूप में, एक प्रबुद्ध प्रोफेसर के रूप में, और हम लोग को सिखाने वाले प्रोफेसर के रूप में हम आपका आदर करते हैं। आप संस्थान में आए, हम आपके आभारी हैं, और हमको लगता है कि आपका संरक्षण हमें आगे भी प्राप्त होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारे बीच में थे हमारे विशिष्ट अतिथि अरुण अग्रवाल जी। वो प्रोफेसर जीपी सिन्हा के स्टूडेंट भी थे, और अलाइड सर्विसेज छोड़ के उनका हाजीपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट में फोम इंडस्ट्री है, बिहार का नंबर 1 इंडस्ट्री, और उनको एक बहुत लर्नेड इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में जाना जाता है। और वो आए, और संजय जी के व्याख्यान के पहले ही उनको फतुआ से बार बार फोन आ रहा था, लेकिन बोले कि इसको बीच में छोड़ के मैं नहीं जा सकता हूँ। इतना एडुकेटिव लेक्चर को बार बार फोन पर बोल रहे थे, मैसेज कर रहे थे, व्हाट्सएप कर रहे थे कि हम आ रहे हैं लेकिन 10-15 मिनट लेट होगा। और 15 मिनट वो 20 मिनट हुआ, आधा घंटा हुआ, और वो पूरे 1 घंटे तक संजय जी के और उनका क्वेरी भी, और उन्होंने डिस्कशन को इनिशिएट भी बड़े अच्छे अंदाज में कराया। हम उनके भी आभारी हैं। अभी वो चले गए हैं फतुआ, हमको लगता है कि शायद वो मोबाइल पर कनेक्ट भी होंगे और हमको सुन भी रहे होंगे। तरुण भाई बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और इंडस्ट्री एसोसिएशन से वो मुझे भी जोड़ के रखते हैं और इस संस्थान को भी जोड़ के रखते हैं। इन्हीं धन्यवाद ज्ञापन के कड़ी में मैं आगे धन्यवाद देना चाहूँगा आरपी सिंह राही साहब को आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए। सर हम लोग के हर कार्यक्रम के लिए उपलब्ध रहते हैं और जवाबदेही हम लोग इनको समर्पित करते हैं और बहुत मन से सर का हमें समर्थन मिलता है और बहुत शॉर्ट नोटिस पर हम लोगों ने ये कार्यक्रम भी किया। इस कार्यक्रम को करने में बहुत सारे टेक्नोलॉजी का यूज़ हम लोगों ने किया, जैसे यूट्यूब में QR कोड, आज के अखबार में एक एडवर्टीजमेंट है जिसको आप देखना चाहेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया में, इसमें भी QR कोड है और बहुत लोगों ने इस QR कोड के माध्यम से इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया।
हम लोग राही सर को बताए कि हम लोग ऐसा ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं, और फॉर्चुनेटली हमको इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो टीम मिली उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो सर, राही सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग को पूरे कार्यक्रम में सर का सपोर्ट मिलता रहा। इसके अतिरिक्त हमारे संस्था के अध्यक्ष प्रोफेसर RMP सिंह साहब थे, ही 90+ और अभी 2 घंटा बैठने के बाद उठ के गए हैं, थोड़ा रेस्ट करना चाह रहे थे, तो उनका भी धन्यवाद। और उनका क्वेरी संजय जी के लिए बहुत था, बड़ा सटीक था। एक क्वेरी उनका छूट गया, शायद वो पूछना भी चाह रहे थे कि वैसे पेशेंट को जिसको पेस मेकर लगा हो उसको किस तरह अलर्ट रहना चाहिए। तो ये हम फॉर्मली इस मंच से नहीं, इनफॉर्मली इनसे हम मोबाइल पर फोन पर ले लेंगे संजय जी से। तो RMP सिंह साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। सुधाकर जी इस संस्था के स्पिरिट हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द ये संस्था घूमती है, और इनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने बहुत काम किया, बहुत सारे प्लान बनाए, बहुत सारा काम किया। और श्रवण जी आज के मास्टर ऑफ द सेरेमनी थे। आपने देखा किस इससे श्रवण जी एक मास्टर ट्रेनर हैं, और उनका एक पैशन है ट्रेनिंग में। वो रेड क्रॉस, सिविल डिफेंस और फायर डिपार्टमेंट और हर तरह के ट्रेनिंग के एक्सपर्ट माने जाते हैं, और हमारे संस्था में पिछले 15 साल से जुड़े हुए हैं। और हम लोग कोई भी फील्ड विजिट करते हैं तो उसमें हम लोग के साथ होते हैं। श्रवण जी आज के सेरेमनी में इन्होंने एक अहम भूमिका निभाई। हमारे एक इंजीनियर एक्सपर्ट हैं जो दिल्ली से हमको ज्वाइन किए हुए हैं, कल वो पटना आ रहे हैं हमारे किसी प्रोजेक्ट के लिए। कृष्ण कुमार जी वो लोग ऑनलाइन हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद विजेता, आपको तो हृदय से ही नहीं, आपको आशीर्वाद संजय जी से मिलवाने के लिए, संजय जी से बात कराने के लिए और इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनवाने के लिए। बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी लेकर के आए। इसमें एक अद्भुत लड़का है जिसका नाम आशीष है, जिससे मेरी मुलाकात 4 महीना पहले ब्लड डोनेशन के क्रम में हुई। एक संस्था में वो अपने मैरिज एनिवर्सरी पर ब्लड डोनेशन करने आया था, और हम अपने मैरिज एनिवर्सरी पर वहाँ गए थे। और आज जो भी टेक्नोलॉजी आप जो यूट्यूब और जूम पर देख रहे हैं, हमारा जो सेंटर है एक टेक्नोलॉजी रूम में कन्वर्टेड है। और हम चाहेंगे कि कैमरा आशीष की तरफ घुमा के जरा आशीष को भी हमारे बीच में लोग देखें। आशीष जरा हाथ उठाइए। और आशीष के बगल में बैठे हैं, ये इंटरनेशनल योगा एक्सपर्ट हैं, और हमारे छोटे इसमें रहते हैं, और बड़े जूम से लेकर के टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देने में। अभी आप देख रहे थे किनका चैट आया, कौन सा किसने थंब रेज किया, ये सब मॉनिटर कर रहे थे। तो आशीष आपका धन्यवाद, जयप्रकाश आपका धन्यवाद। जयप्रकाश योग के ऑनलाइन ट्रेनर है। एक दिन इन्होंने मुझे टैग किया तो US के लोगों के साथ टैग कर दिया। मुझे थोड़ा एम्बैरेसमेंट लगा, तो मैंने कहा कि आगे से आप मुझे US के लोगों के साथ टैग नहीं करेंगे, मुझे सिखाना होगा, तो आप ऑनलाइन मुझे अकेले सिखा देंगे। तो ये एक छोटा सा परिचय। छोटे गुरु लोग हैं, लेकिन हम लोग की संस्था को बड़ा बड़ा सपोर्ट देते हैं, तो थैंक यू सो मच। और सारथी की बात तो हो गई संजीव की, लेकिन जो पूरे ऑफिस
वोट किए थे क्या? मेरे फैमिली मेंबर्स हमारे बीच में थे, हमारे बड़े भाई थे, उनको प्रणाम। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी का धन्यवाद करता हूं और आपसे आग्रह करूंगा इस तरह का आगे कोई आयोजन हो तो अपना समर्थन अवश्य दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष, आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे गुरुवर मैं प्रोफेसर डॉक्टर राही जी से यदि इजाजत मिले तो इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा की जाए। सर, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष की इजाजत से आज के इस वेबिनार के समापन की घोषणा की जाती है। सबको धन्यवाद और आभार।